Hello, 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 hello. What's up, guys? What's up? Sorry, some technical issues. Anyways, guys, कल की qualifying के अंदर it was huge. I think a lot of setbacks we saw, especially Max Verstappen. We all were hoping that Max Verstappen is going to take it all the way along. Podium position, pole position पे लेके जाएंगे वो, but somehow Max Verstappen reliability strike them. The drive shaft was off. Drive shaft एक आसान component है, I guess. टूटने के लिए because it's under a lot of pressure from the gearbox to the transmission that it gives to the tire. बट उसके अलावा आई कैन सी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से. So we saw Max Verstappen changing gearbox. We saw Checo Perez changing gearbox. We saw Nick De Vries in the Alpha Tauri, the junior team, changing the power unit. We saw a lot of other reliability issues as well up and down the grid. खाली Alpine की ऐसी गाड़ी है जो शायद बता नहीं रही है, फिर उनके reliability issues है नहीं, बट बाकी सब लोगों के reliability issues तो हैं. Anyways, let's look at the grid first. Grid पे चलेंगे, ट्रैक को देखेंगे, पेनल्टीज लेक्लेक की बात करेंगे, देन रेस पेस कंपैरिजन करेंगे कि भाई कौन कितने पानी में है रेस पेस के अंदर. हमने FP2 के अंदर रेस पेसेस काफी देखी थी, उनके अकॉर्डिंग. देन कौन कौन सी जगह टायर्स अवेलेबल है, किस किस ड्राइवर के पास टायर्स अवेलेबल है. वेरी इंटरेस्टिंगली पेरेस एंड ओलोंजो दोनों के पास ही कोई सॉफ्ट टायर्स अवेलेबल नहीं है. तो नाउ व्हाट विल हैपन विद देम. कौन किससे चालू करेगा. पेरेस के पास तो एक मीडियम टायर अवेलेबल है सॉफ्ट, बट ओलोंजो के पास तो वो भी नहीं है. तो विल द विल द सॉफ्ट टायर जो जो नए मीडियम का एक बेनिफिट है, क्या वो पुराने सॉफ्ट से कंपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, वो देखते हैं. देन उसके बाद टायर स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी टायर स्ट्रेटजीज अपना सकता है. And in the meanwhile, with everything, Shubham will also join us today as well. We are very fortunate to have Shubham with us. He is an ex Red Bull engineer and he's doing his thesis. उन्होंने masters करी इटली से यूनिवर्सिटी से, and then he had multiple opportunities to join Ferrari, Mercedes, and then Red Bull. He chose Red Bull in 2021. And then great thing is Max Verstappen जीत भी गए, तो उनको वो एक्सपीरियंस में मिला. कल हमने उनसे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनी थी. आज हम नीरज भाई से भी बात करी. गो टू इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पे नीरज पूरन राव, दी अमेजिंग इंडियन पर्सनालिटी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था नेटफ्लिक्स की सीरीज द अप्रेंटिस 1 के अंदर. सो यू कैन गो एंड चेक हिम आउट एज वेल. ही इज अ फैंटास्टिक गाय, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी. जेदा के अंदर रेस देख रहा है, कितना लकी आदमी है. एनीवेज, विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स टेक कपल ऑफ कमेंट्स. कैसे हैं सब लोग मेरे भाई लोगों. मनीत ने क्या बोला, 8 बजे चालू कर दो मनीत के हिसाब से, तो तू घर आ जा भाई, अपन दोनों साथ ही में रहते हैं. जैन क्या बोल रहा है, कम ऑन विन फ्रॉम 15th. ये देख भाई जैन, मुझे ना ऐसा लगता है कि विन फ्रॉम 15th मैं समझ गया, थोड़ा मुश्किल होगा, बट रेस पेस के अंदर यार वो 6-10 सेकंड आगे है, 5-10 सेकंड्स आगे है मैक्स वर्स्टैपन. उसकी रेस पेस बहुत अच्छी है, टायर डेग्रेडेशन एकदम कम है, कॉर्नर्स की एकदम स्टेबिलिटी है, वो बंदा कूल काम रहता है. आई थिंक 2021 के बाद बहुत ज्यादा मेच्योर हो गया वो बंदा. 2022 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो डोमिनेंट फैशन की तरह जीती, उसको पता है जीतना कैसे है. पहली चीज. दूसरी चीज, आई नो दिस इज नॉट बेल्जियम कि 14 पोजीशन जीत जाएगा, बट रिमेंबर दिस इज आल्सो नॉट मोनाको कि यार यहाँ पे खाली अब अंडर कट एंड ओवर कट से काम चलेगा. यहाँ पे वो मैक्स वर्स्टैपन लेके जा सकता है. लॉट ऑफ स्ट्रेट्स, स्पेशली 3 DRS जोन है, मल्टीपल ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटीज है, मल्टीपल. हाँ मैं जानता हूँ कि इतनी वाइड नहीं है ग्रिड, इतना वाइड नहीं है ट्रैक, मैक्सिमम 15 मीटर्स का ट्रैक है, बट स्टिल पोडियम पोजीशन तो तू देगा नहीं देगा जाए. मुझे बता यार कमेंट के अंदर, तू देगा नहीं भाई लोग. आप मुझे बताओ आपके हिसाब से मैक्स वर्स्टैपन कहाँ रहने वाला है. El Plan hype, yes Goofy भाई, El Plans hype, yes Master Susu. कैसा है मेरा भाई मास्टर सुसु, यार नाम तेरा मस्त है यार. आर यू सपोर्टिंग हैमिल्टन. आई विल ऑलवेज सपोर्ट एन अंडरडॉग. नहीं क्या मुख्तार, मैं हमेशा एक अंडरडॉग को सपोर्ट नहीं क्या. अपन यार अपन क्या ग्राउंडेड आदमी है अपन यार. भाई लोग को सपोर्ट नहीं करेगा कौन करेगा यार. जो जिसके भाई की पड़ी होती है ना, भाई खड़ा होता है, नहीं क्या. तो यार मुझे लगता है कि यार मैक्स वर्स्टैपन भी अच्छा बंदा है, ही इज अ फैंटास्टिक गाय, वो अपनी मेहनत से ऊपर पहुंचा है. बट आई वांट कि यार मल्टीपल टाइटल फाइट्स हो ना, 3-4 जगह से लोग आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, अंडरकट मार रहे हैं.
Oh my God, this is what you want to see in Formula 1. Like Formula 2 के अंदर हो रहा है. How can I forget? जिहान दारूवाला, he's a fantastic gem of a person. He's making India so proud यार. इंडिया का झंडा जब हम पोडियम पे देखते हैं भाई, छाती चौड़ी नहीं हो जाती भाई, एकदम फट के सीना बाहर से आ जाता है यार. देखता हूँ यार जिहान दारूवाला को वहां पे. कुछ महीने की भी रेस काफी अनफॉर्चुनेट थी, कुछ एक प्रॉब्लम्स हुई उनके, बट ही लैंडेड इन P12. But anyways, both these drivers are making India so proud. I'm so happy. Yeah, we were born in a country where people are doing so excellent in every other aspect. Huh? Nahi kya? Any bets on how soon would Alonso take over Perez? My bet is either first lap or lap 52. How soon will Max will be in top? Okay, top 3 भाई. आप तो lap 15 पे उसको top 3 पे पहुंचा दिया. पहले पहले are you certain कि Alonso Perez को overtake कर लेगा? Perez is also a minister of defense. He's very good in street circuit. He knows where to put the track, where to put the cars. We saw as an ultimate race when he won in Baku 2021. नहीं क्या आपको याद नहीं क्या race? He put उन्होंने हर जगह अपनी गाड़ी को वहाँ रखा जहाँ वो रख सकते हैं. Multiple races in 2021 and 22 as well. And जहाँ पे हमने देखा Perez did a fantastic job. Why are we underrating Perez over Alonso? I don't know. But I am not. Now if this happens, दोनों का रिएक्शन टाइम क्या रहता है? हमने ना ज्यादा रिएक्शन टाइम्स शार्ल लेक्लेर्क एंड मैक्स वर्स्टैपेन के देखे हैं फ्रॉम फ्रंट रो. वी हैव नेवर सीन एनी कंपैरिजन बिटवीन अलोंसो एंड पेरेज एवर. दिस विल बी द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली इन फ्रंट रो दोनों का हमको रिएक्शन टाइम देखने मिलेगा. तो टर्न 1 के अंदर किसी का भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेरेज टर्न 1 के अंदर अलोंसो से आगे हो गया ना, बहुत मुश्किल होने वाला है अलोंसो को. हाँ, टायर स्ट्रेटजीज के ऊपर आई डोंट नो, टायर स्ट्रेटजीज के ऊपर भी पेरेज इज गोना बी मच अहेड ऑफ एस्टन मार्टिन, but let's see what happens. Very interesting comparisons. I would want to know, why did you come up with these theories? For sure you can drop in the comment. I would want to hear from you again. देखते क्या होता है. हेलो देवांश, व्हाट्सअप. दिव्यांशु, व्हाट्सअप. फ्लैंकर भाई, कल भी आया था तू, बड़ा मजा आया तेरे साथ यार रेस देख के. डिड यू नोटिस द वे लुइस सेड ही कैन नॉट कनेक्ट विद द कार? यस, वी विल बी लीविंग मच टू डू व्हाट यू थिंक. यार मैं ना आज शॉक हो गया था. मैं गाड़ी चला रहा था, फॉर सम रीजंस मैं ना दोसा गया था, मतलब जयपुर से जो दिल्ली का रास्ता नया बना वहाँ दोसा गया था. तो आई सॉ, एक मैं गाड़ी चलाते था, नोटिफिकेशन देखा लुइस हैमिल्टन ने रिटायर कर दिया. वो किसी का ब्लफ था, बट आई वाज एब्सोल्युटली शेल शॉक्ड. बट ऑन द अदर फैक्ट, ऑन द अदर फ्रंट, आई आल्सो थॉट कि यार, will it make sense for Lewis to continue with a car like this? Lewis Hamilton 2000 what I think 2006 के अंदर Lewis Hamilton Formula 1 के अंदर आए थे. 6 में आए थे, 7 में आए थे, I don't remember. Guys tell me in the comments. But from then itself, I think 2007 में आए थे, जब Alonso ने भी McLaren join करी थी. It was the first year when Kimi Räikkönen won and the Spygate happened. Anyways, coming back to the point, since ever, Lewis Hamilton always got the best car because of his capabilities, mind matters, because of his capabilities. But other than that, what I think is now for him to continue, if he wants to leave Merc, then leave Merc for where? मतलब ऐसा तो नहीं खुद की टीम बना लेगा, बट लीव मर्क फॉर वेयर? एस्टन मार्टिन प्रोबेबली, बट लांस स्ट्रोल छोड़ने वाला, और अलोंसो को वो एस्टन मार्टिन नहीं छोड़ने वाली. रेड बुल में जाना थोड़ा मुश्किल है. फरारी प्रोबेबली अ केस, बट फरारी अगर जीतने लगी तो जाने का फायदा, नहीं तो मर्सिडीज कौन सी बुरी है. तो क्वेश्चन है यार, जाएगा तो कहाँ जाएगा ना, मतलब वो वाला पॉइंट है. What's your prediction for Max? My prediction is definitely a podium for Max for sure. Max's problem made the quali more interesting. Yes, that's the only thing we saw in quali. नहीं तो ऐसा लग रहा था Max लेके जाने वाला है. Alonso हाई प्लेन में हम सब बैठे हैं भाई, हम सब बैठे हैं. हाय भाई लोगों, सब भाई लोगों को हाय, मेरा प्यार, मेरे 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 जानियों, मेरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? थैंक यू यार, आप लोग आते हो, मेरा उत्साह बढ़ाते हो. मेरे को ऐसा ना, रात को 10:30 बजे की रेस में बहुत मुश्किल होती है. आप भी जानते हो, पिछले साल मेरे साथ जितने भी लोग थे, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के जब रेसें आएंगे ना, मेक्सिको की, ब्राजील की, यूनाइटेड स्टेट्स की, भाई जगह ही नहीं जाता भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत नींद आती है. बट आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, विश्वास है जो जिसके कारण बैठा रहता हूँ मैं आप लोगों के साथ. पता नहीं आपको मेरे को सुनने में क्या मजा आता है. मैं खुद को मेरा सुनने में, बाद में मैं खुद की हिस्ट्री नहीं सुनता. I'm just kidding, but it's a lot of fun to watch the race with you guys. It's an amazing opportunity for me. Alonso fighting for championship after so many years. Yes, after so many years. 10 साल बाद जीत सकता है लौंडा, और 10 साल बाद जीत सकता है भाई. How soon do you think will he achieve the 33rd win? भाई इसी में जीत जाए, इसी में. भाई आप जयपुर में कहाँ से हो? भाई मैं श्याम नगर रहता हूँ, अपने मन्नू हॉस्पिटल के पीछे. कभी भी आ जाइए, चाय पियेंगे मस्त. Hey, do you think he can finish on podium? Yes, I think that can happen. आ गया आनंद द्विवेदी. क्या बोल रहे द्विवेदी साहब?
My analysis is Perez doesn't have a good record in terms of starting from the front of the grid, wheel spin, etc. Okay, Alonso is supercharged old man, has history of rocket starts. यार थोड़ी सी बेसलेस लग रही है आपकी थ्योरी, क्योंकि अभी देखो हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, पहला अलोंसो का, दूसरा पेरेज के। मल्टीपल रेस स्टार्ट्स अपन ने देखे हैं, तो अपन ने ये भी देखा है कि पेरेज ने मल्टीपल रेस स्टार्ट्स के अंदर बहुत लोगों को ओवरटेक भी किया है। मल्टीपल रेसेस हुई हैं, स्पेशली स्ट्रीट सर्किट के अंदर। अगर अपन को मोनाको याद करें, जिसके अंदर पेरेज ओवरकट मार के लेके चला गया था, बहुत लोगों को ओवरटेक कर लिया था उसने पोजीशन के अंदर। लुइस हैमिल्टन सेकंड बाद में फिनिश किया था 2022 की अपन मोनाको ग्रांड प्री देखे तो। मतलब मल्टीपल चीजें हैं, इसको अपन ऐसे ऐसे इतना आसानी से आपने जज कर लिया क्या? यह जो दोनों होता है थोड़ा सा टेक्निकल बन रहे हैं यार, फॉर्मूला 1 देख रहे हैं। Where can I watch Formula 1 India? F1 TV bro. कुछ निपुण दिस साइड। निपुण तेरा नाम चेंज हो गया क्या? चेंज कर दिया फन में। Wanted to say लुइस ने इंटरलागोस से करा था तो मैक्स इजीली कर सकता है। ओके, मुझे चाहिए कि आई वांट चेको टू विन विलियम आर्क क्या विलन आर्क इज नीडेड। ओके, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट फॉर हास? हास का भी प्रेडिक्शन मांगता है कोई? पांडे जी हास का प्रेडिक्शन मांग रहे हो आप? अभी देखते हैं उसको ग्रिड पे कहां पे वो। और स्पैम मत करो यार ब्रो, अच्छा नहीं लगता यार। सत्विक पांडे भाई आप भी स्पैम मत करो यार। यार दीपन भाई, दीपन कैसा है भाई? भाई 15 मिनट में आया अभी मैक्स। 15 से कितना आया है अभी मैक्स? क्या बोला यार यश, मेरे को समझ नहीं आ रहा। Let's start presenting. Let's see the grid first. Cool. So the grid is Perez, Alonso, Russell. Perez, Alonso on turn, मतलब front row, दोनों front row पे होंगे। I think what 3 या 4 मीटर पीछे एक दूसरे के, something like that. But yes, it's a long distance in terms of Formula 1. Then Russell and Sainz. Sainz is gonna have an interesting race. मल्टीपल लोग हैं। एक तो पेरेज बैठा है फर्स्ट नंबर पे, मैक्स वर्स्टैपन 15 पे, साइंस 4th पे, शार्ल लेक्लेर्क 12th पे। बहुत ही डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग रेसें होंगी दोनों के खेमों के अंदर। नहीं, दोनों टीमों के खेमों के अंदर गेमा गेमी चल रही है। एक बंदा लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहा है, एक बंदा शॉर्ट जाने की कोशिश कर रहा है। दोनों अलग तरह की लड़ाई करेंगे। ओलोंजो एंड स्ट्रोल, स्ट्रोल ऑन 5th एंड ओकॉन 6th। यार ओकॉन इज कमिंग बैक यार, आफ्टर अ वेरी बैड रेस इन bahrain. ओकॉन विल कम बैक। हमारा भाई हैमिल्टन ऑन 7th एंड पियास्ट्री ऑन 8th। पियास्ट्री इन पॉइंट स्कोरिंग पोजीशन दिस रेस। यार बहुत ही अच्छा लगेगा रूकी को सेकंड रेस के अंदर पॉइंट्स ले जाते हो, बहुत अच्छा लगेगा देख के। गैसली एंड हल्कनबर्ग ने, यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि हल्कनबर्ग लेके जा रहा है कुछ ना कुछ। अगर भाई भगवान करे उसका फ्रंट विंग खराब ना हो, bahrain ग्रांड प्री की तरह उसका फ्रंट विंग ठीक रह जाए, भाई कोई टकराए ना इस रेस के अंदर। मेरे को बहुत ओवरटेक देखने, मुझे ये नहीं चाहिए कि यार हल्कनबर्ग बेचारा अपने उसका फ्रंट विंग टूट गया तो पीछे घूम गया। नहीं यार, ऐसा नहीं चाहिए यार। अपने को चाहिए कि ऊपर रहे, फाइट में रहे यार। अपन को है ना मेरिटोक्रेसी, जैसे अपन ने कल बात करी थी, वो चाहिए। रोग न्यू 11th पोजीशन व्हिच इज a bit ahead, again 3-4 meters ahead of Charles Leclerc. On the 6th row on the grid, then Magnussen and Bottas, Verstappen and Tsunoda, Alonso and De Vries. Unfortunately दुख होता है नॉरिस को यार देख के। नहीं होता क्या भाई? दुख होता है, दुख यार। नॉरिस जैसा बंदा, इतना बढ़िया बंदा यार, 19 पोजीशन पे, बहुत दुख होता है देख के। उसका छोटा सा चेहरा याद आ जाता है, कितना बढ़िया बंदा है यार। कितना नीचे रख रखा है लोगों ने। ओ भाई काश कुछ करे मैक्लेरन भाई, भगवान करे, भगवान मैक्लेरन को कुछ सद्बुद्धि दे दो। let's check out the other things. Let's see the race in 13 मिनट बचे हैं अपने पास। एक सेकेंड, जस्ट वन थिंग है ना। let's see। मैं कुछ से ही बात करूंगा, कहाँ रह गया कुछ? आज लेट हो गया वो बहुत। So these are the tires that everybody has. Max Verstappen के पास एक सॉफ्ट है। चलो पहले ना अपन ये देखते हैं रेस पेस स्ट्रैटेजीज। रेस पेस के अंदर रेड बुल ऑब्वियसली सबसे आगे है। फरारी उनसे 0.25% पीछे है, या मैं कहूँ 0.23 सेकेंड्स पीछे है। 2/10 of a second पीछे। Then Aston Martin is there. Aston Martin Ferrari के अंदर डबल का डिफरेंस है यार। This is something. Then we have Mercedes. Then 1 second. I think मैंने किसी का कमेंट अभी तक हाईलाइट कर रहा है। Then we have Mercedes very closely matched with Aston Martin. Then we have Alpine. We have Alpha Tauri, Williams.
McLaren, Haas and Alfa Romeo. यार अल्फा रोमियो कुछ करना चाहिए. अल्फा टॉरी काफी आगे नहीं रेस पेस के अंदर. जिस तरह की उनकी पोजीशन है एकदम लास्ट ऑफ द ग्रिड, they don't deserve to be that. Is that true or not? I don't know. But race pace के अंदर they are good. Probably they have a better race. Haas, if it's ninth in the position, then Hulkenberg के पास टायर डिग्रेडेशन ज्यादा है नहीं ट्रैक के अंदर, बट फिर भी अगर रेस पेस इतनी अच्छी नहीं है, then everybody is running very low downforce, very less drag on the grid, especially because of the rear wing. So probably their race will be interesting as well. But yes, front of the grid will be very interesting to see. Plus Max Verstappen from 15th position and Charles Leclerc from 12th position. Let's see where they end up. It's gonna be a very interesting race. Let's check out the track in a couple of minutes. For a couple of minutes, यहाँ से चालू करेंगे लोग. Everybody will start going into turn 1, taking a 90-degree left, and then to the right, not exactly 90 degrees, but even more than 90 degrees, I guess. They're going to take that. यहाँ पे track थोड़ा narrow हो जाता है. Then comes the turn 3, which has a small kink to the turn 4, but everybody goes flat out here. Then 5, 6, 7, 8, and 9. Very interesting twisty corners. Then comes the 10th. 12th, यहाँ पे बहुत स्ट्रेट आउट कर सकते हैं. स्लिप स्ट्रीम का बहुत फर्क पड़ेगा यहाँ पे. देन गोइंग इनटू द टर्न 13, हमने कल देखा था कि ओलोंजो इज वेरी गुड एट ऑब्वियसली ब्रेकिंग के अंदर बिकॉज ऑफ एस्टन मार्टिन्स कैपेबिलिटी. वो ड्रैग थोड़ा ज्यादा रखती है बिकॉज टर्न फोर्स ज्यादा है, हेंस ग्रिप ज्यादा है, हेंस ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग ज्यादा हो जाती है उनकी. सो 13 से निकलते हुए 14 के अंदर जाते हुए 16, 17 यहाँ पे DRS डिटेक्शन जोन है, which will help the drivers go into the DRS zone, the number 1. 19 से 20, 21 and 22 तक निकलते ही अगेन एक और DRS जोन है 22 के पहले, जो हेल्प करेगा यहाँ पे 25, 26 and 27 पे डिटेक्शन जोन 27 के पहले था, जो चेंज कर देते हैं 27 के बाद रख दिया है, ताकि पिछले साल की तरह इस बार हमको चेस मैच देखने नहीं मिलेगा. But उसके बाद DRS detection zone के बाद we have the straight again with the DRS. Checking out the tire strategies, we have the fastest one-stop tire strategies will be the 18 to will be एक सेकंड, शुभ भाई आ गए. शुभ भाई को वेलकम कर देते हैं. शुभ भाई, hello, what's up? Hello everyone, can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. Loud and clear. Nice. देखो आज मैं थोड़ा ग्रीन पहन के आया हूँ. Nice. तो समझ में आ रहा है माहौल क्या बन रहा है. Nice. In middle of the race, I have that Vettel cap है. मेरे पास पिछले साल की Vettel की V5 वाली कैप है, मैं वो पहनूंगा बाद में. क्या बोल रही जनता? जनता मजे ले रही है अपने. I was just completing the tire strategies. So the tire strategy, the fastest tire strategies right now we have is the mediums, then to hards, then very short stint of the reds or the softs, then going to the hards again. पहले देखते हैं कितने लोगों के पास हार्ड टायर्स हैं. नए हार्ड टायर्स किसके पास है? ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज हार्ड टायर, बट Alonso doesn't have a new hard tire with him. Oh my God. उनके पास एक नया मीडियम बचा है सिर्फ. That's it. एक नया मीडियम. भाई, what do you think? Where will these drivers? Which tire will these drivers start from? Especially Alonso and Perez. Chalu to most probably will be on the mediums. I think they're going to follow a very straightforward strategy because क्या है ना कि यहाँ पे डेक बहुत कम है और मीडियम टायर ने तो दिखा दिया FP2 के लॉन्ग रन पेस में कि इट्स बेटर देन द सॉफ्ट. Only people I see gambling on the soft, like usually आप सोचोगे कि कोई गैम्बल करेगा सॉफ्ट पे जैसे अपना वर्स्टैपेन भाई और लेक्लर्क भाई, लेकिन क्या सीन है कि there is not enough pace delta कि भाई ये लोग अंदर आएंगे, पिट में आएंगे and then these guys can push. So I think it will be a boring start in terms of everybody just trying the C3, the medium tires. और आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ये पता नहीं था कि अलोंसो के पास नया हार्ड नहीं है. ये क्या सोच, मतलब एस्टन मार्टिन की स्ट्रेटजी चली गई स्काई स्पोर्ट्स पे, मतलब ये लोग भूल गए करने. देखेंगे, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. चल क्या रहा है भाई इधर. I mean, seriously, यार, मतलब if you don't have a, I mean, then what matters is probably I think they will go long in the first stint itself. जब तक पेरेस के टायर थोड़े पुराने होने लग जाएंगे, for example, they both are on medium, ठीक है? Imagine they both are on medium. दोनों के पास medium नया है. I think that I don't know which one who will be ahead in turn 1, but दोनों के पास medium है, तो जो भी turn 1 के अंदर आ गए हो, मान लो Alonso आ गए और तो पेरेज आ गए, तो ओलोंजो क्या करेगा? ओलोंजो इस पिट विंडो जैसे 25 पिट विंडो है एंड 18 to 25 है, तो पेरेज अगर 21 या 22 बिकॉज ऑफ द टायर लेस टायर डेग्रेडेशन, अगर वो 22 पे भी पिट करेगा तो ओलोंजो थोड़ा सा और आगे जाएगा. ही विल लेट दैट लाइफ, दैट डेफिसिट ऑफ द लाइफ will be overcome by the mediums.
things. What I think is वो 25, 26, 27 पे नया टायर ले सकता है, जब तक पेरेज के टायर भी 5 लैप पुराने हो सकते हैं. So this probably can be the tire strategy. इसमें सबसे अहम बात यह है कि Perez is great at tire management. He might not be a very good भाई साहब Alonso कम नहीं है. हाँ, Alonso is just next level, but if you know, Alonso and Perez are two of the best people on the grid. Yes, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम सही बात है. It's very important who gets a better start. You know, like if Alonso is ahead, then Alonso is going to push like crazy. क्योंकि scene क्या होगा? Perez will try to overtake him. क्योंकि scene with DRS they have a 20 km/h advantage literally with DRS. So Alonso will try to push so that Verstappen को 1 second के within DRS ना मिले. लेकिन अगर Perez आगे चला गया, then I think it will be a game of tire management. So भाई देख, बिल्कुल सही बोल रहा है तू. अगर पेरेज आगे चला गया तो पेरेज तो स्ट्रेट्स में ले जाएगा, स्पेशली व्हेन वी सी दीस सेक्टर्स ना. व्हेन वी सी दीस सेक्टर्स, चलो यहाँ तक तो वो मेंटेन करेगा, बट जब वो 13th लैप के अंदर जा रहा होगा, तब तक के बाद 13th लैप की जस्ट एंट्री पे वी हैव सीन आई थिंक एस्टन मार्टिन अगेन इज वेरी गुड ऑन ब्रेकिंग, बट स्ट्रेट्स के अंदर यहाँ जाते ही मेरे ख्याल में 1 या मैक्सिमम 2 लैप लगेंगे पेरेज को. अगर पेरेज टर्न 1 के अंदर आगे होगा अलोंसो को छोड़ने में. डीआरएस तो भूल जा भाई तू. नहीं, आपको क्या लगता है? तो नहीं, यहाँ पे पेरेज खेल सकता है 2 टाइप के गेम. एक जस्ट रन अवे विद इट कि भाई 2 सेकंड का गैप निकालो, थोड़ा कुशन दो 1 सेकंड के लैप के, एंड देन यू जस्ट मेंटेन द पेस. दिस इज वेयर अलोंसो कैन also start saying कि आई एम नॉट गोना पुश यू, क्योंकि जितना अलोंसो पुश करेगा उतना ज्यादा पेरेज भगाएगा 2 सेकंड गैप निकालने के बाद. एंड दैट इज वेयर अलोंसो कैन गेट वेरी ट्रिकी इन हिज ओन राइट कि भाई ज्यादा पुश नहीं करेगा मैं तेरे को. And then it all comes to who pits when. So then when the pit window comes, Alonso will try to push because he would like to undercut Perez. और इन सब के बीच में होगा अपना सेफ्टी कार. If you remember last year क्या हुआ, Perez was extremely unlucky with the timing of the safety car. So it'll be, I think you shouldn't be the first one to blink. If I was Perez, I would pull that gap and I wouldn't blink first. But do you remember that I understand that the differential between the Perez and Leclerc was there. Perez pitted early. Perez was very unfortunate कि उसने एक ऐसे पॉइंट पे पिट करा जिसके जस्ट अगले लैप के अंदर एक सेफ्टी कार आ गई. बट उसके बाद भी द किंग लतीफी, वी शुड always King Latifi is the king always who changes the King Latifi has changed almost all the races wherever he has hit the wall in the race time, probably. Goat Latifi. Sorry, Goat Latifi. Yeah. Other than that, also अगर अपन है ना Leclerc की भी बात देखें ना, तो Leclerc ने जब सेफ्टी कार पे पिट किया था तो Verstappen ने नहीं किया था. तो अपन देखें तो अगर Verstappen उसमें सेफ्टी लैप में पिट करता ना, तो the race would have been even different. So Verstappen also didn't blink when he had to. So that was also a brilliant strategy that Verstappen did. Hence, Verstappen was there where he was there in the contention to the win, and then he won again. Yeah. हाँ, लेकिन क्या strategy रहती है ना गीत भाई की, normally whenever you have 2 cars ahead, the lead car gets the preference. हमेशा. इस Mercedes ने भी बोला है बहुत. So that is what happened with us in that race last time round. कि Perez आगे था, he gets the preferred strategy, he blinked first. It was just unfortunate. अगर Verstappen होता आगे, so Verstappen would have pitted first in that race. That's true. I don't know. I will write this and I will tell you probably. I'm not here to tell you that you're wrong, but I'm just telling you that it would not have happened, because a lot of time it has happened in the last year itself that there were multiple race strategies that blinking was necessary. I don't remember the exact races, but a lot of time when safety cars were there in specific circuits, I don't remember if it was Austria, was it Hungary, I don't remember exactly, but there were races when safety car came, Ferrari pitted, Red Bull stayed out. Red Bull didn't even care. They didn't even blink. We don't need this shit. We do whatever we thought we'd do, because their tire management was so crazy that they didn't even had to blink. But yes, I'll make it a point that we will talk about this probably in a video together after this race. There's just 2 minutes left for us. Is there anything that you want to discuss before the race? Probably throw some light on the race pace simulations.
Well, रेस पेस बोलता है कि भाई द सरप्राइज ऑफ द डे कैन बी द एल्पिन्स फॉर श्योर। ये भाई ये फार्मूला 1 का रेस पेस है, पता नहीं क्या लगा के लिखा है, बताया इन लोगों ने क्या मॉडल्स हैं इनके, लेकिन आई थिंक द सरप्राइज ऑफ द वीक कैन बी आपके रेस पेस के हिसाब से क्या अरे ये गलत है इसमें, फार्मूला ये 1 का बताओ आप इसको छोड़ो, इसको एसेस कराओ, आपके आई हिसाब डोंट से नो। कौन आगे कौन क्या होता पीछे? है कि देखो एस्टन मार्टिन इज नॉट हाफ अ सेकंड ऑन रेस पेस बिहाइंड, ओके दैट इज एकदम इतने पीछे नहीं है। दे आर नेक टू नेक विद फरारी आर हाफ सो the difference I'm expecting is 2 or 3 tenths for both Aston Martins and the Ferrari. The Mercedes are half a second behind. The Alpines and the Mercedes are on equal pace. और उसके Okay. पीछे हास तो मरेगा भाई, हास is just going to go backwards because even अच्छा, their sorry, I race write this down. were So really first really is fast. Red Bull. How far is Ferrari to Red Bull, according to you? Both for Ferrari and Aston Martin is 2 to 3 tenths in my opinion. 2 to 3 tenths. Okay. Ferrari and Aston But Martin. Ferrari has bad tire management, so Ferrari will fall back behind Aston in my opinion. On a track like this, how much do you think tire management will be, as important It all as depends. in a track like Bahrain? कि हाँ तो a lot has changed, right? Because अभी tire pressure drop किए थे, बाद में फिर से बढ़ा दिए, and then the cars are faster than last year's car around this track. So and if the drivers are going to push like even Cars are last year, faster? aren't Why they do you say faster? so? Did they set like faster lap times in quali? How? Because last year Perez was like 28.2, but this year 28.2.65 something. Okay. Yeah, no, that is my bad. I think I've seen the free practice lap times and they were Maybe, faster. yeah. So I thought even the quali would be faster. The quali Okay, was not. quali was just on equal space. Yeah, So yeah, almost if equal. that's the case, because even last year में था कि both the drivers were pushing, Leclerc और Verstappen दोनों झगड़ रहे थे, so nobody was like saving tires. So it might not be a big factor as you say. Definitely not big enough for a 2-stop race. It's a 1-stop race for sure. लेकिन Ferrari would still struggle. See, it's all about relative performance, है ना? So if there is less tire That one management, is relative. Nothing is absolute. Yeah. exactly. Formation So lap अगर just started. Yeah. Oh, did it? So yeah, it's all about relative management. So if they are relatively worse compared to Astons and Mercedes, then Mercs can try and definitely get on Sainz. I think अच्छा लग तो पीछे है, Sainz को ओवरटेक मार लेगा रसल। अच्छा मेरा तो गया भाई लाइव स्ट्रीम, सही बात है। Nice. I'll one sec. I'm अरे just. ये bring up the F1 thing, no? Yeah. That's what I was actually doing. We think so. Like. Give me 1 second stream. Yeah. Sure. ठीक है. Awesome guys, awesome. क्या बोल रही है जनता? आपस में बात कर रही है, बढ़िया भाई, भिड़ो बैंटर करो एक दूसरे को भाई, लड़ो. This is what sports is, right? That's what I love about चलो sports. भाई. Yeah. Too Soft weak. and hard. Yeah. Possible strategies. कौन करता है देखते हैं भाई. Lewis Hamilton on hard. Nice. Charles Leclerc on soft. Yes. Whoa. Charles Leclerc has got how many soft? अपना हिंदुस्तानी ब्रेन चालू हो गया है. हिंदुस्तानी ब्रेन चालू हो गया है. भैया देखो ऐसा है ना बीवी ना बच्चा. The whole thing is that कि भैया पहले लैप पे आगे जाना है. पहले लैप जैसा जंप नहीं मिल सकता यार, पहले लैप जैसा जंप नहीं मिल सकता. It's going to be very interesting. Max Verstappen के जस्ट आगे केविन मैग्नुसन होने वाला है, शार्ल लेक्लेयर के जस्ट आगे निको हल्केनबर्ग होने वाला है. दोनों हास दोनों लोगों को बचा के रखिए, कंटेन करके रखेगी. Let's see what happens. I'll take Verstappen will be quite cautious during the start, in my opinion. वो हमेशा ऐसे ही चलाता है, अभी पीछे से चालू करता है ना, आराम से चलाता है, भगाता नहीं है. He will make the overtakes on track. नहीं ये या कल उसको 2021 के बाद ही है ये भाई. 2021 तक तो वो कुछ आ जाए, वो सबकी ले लेता था. सॉरी बट या ब्रो हमेशा से क्वेश्चन था Red Bull to Aston Martin. Yeah. आज मैं Aston Martin का सपोर्टर है भाई, आज अलोंसो जीतना चाहिए. Nice. I'll just come in 1 second.
All right, chat. Are you ready? Formation lap. Perez is lining up on the grid. Ocon top 3. What do you think? नहीं भाई, Ocon top 3 नहीं आएगा. Ocon का फैन क्यों है भाई दीपान तू? ब्रो हमेशा से एक क्वेश्चन है रेड बुल. हाँ भाई अब्बास बहुत बड़ा रीजन है. They have invested a lot. It might not be an automobile company, but motorsports is not about automobiles. Motorsport is about top level technology. So as long as they have the same facility as every other team, you're good to go. And Red Bull's facility is that good. अरे भाई दोनों Aston Martin के supporters. So whoever is in turn 1 winning, I'll put that cap. Okay. अरे ये क्या भाई? By the way, I have a Mercedes, McLaren, Alpine. Anyways, the race is about to start. ये भाई वैभव शर्मा. Which one? He Nice, just went nice. on spamming chat. Lights out and away we go. And off we go. Alonso ले गया भाई, Alonso ले Oh, गया. Alonso. पहले Alonso क्या ले गया. पहले? लॉन्डे क्या बात है? अरे भाई पप्पी ले ले. क्या बात है? Very good. अरे ले. Quite clean first lap, ना? अरे कुछ तो उड़ रहा था यार. Everyone's quite cleanly out. So no scenes for Leclerc and or Verstappen. Both are out clean and quick. Hamilton has not lost any ground on the hard tire, so that's good for But him. not gained as well. Ooh, Stroll भाई. Yeah, ये yeah, ठोकेगा. yeah. बच गया. Man, that's a freaking good move. Round turn 13. Around the outside. Oh! भाई ओलोंजो को पेनल्टी मिल सकती है. में मिलेगी भाई. Incorrect starting position is always normally a 5-second penalty. Yeah, Oscar Piastri's got damaged. यार क्यों? भाई पेरेज फाइट कर रहा है मस्त उससे यार. पेरेज इज लाइक व्हाट गोइंग इनटू टर्न 1. ही वाज so close. अरे अलोंसो को क्या 100th of a सीन है second. यार. क्या भाई वाई क्या पेनल्टी है यार ये. Whoa, look at them. भाई पेरेज ओलोंजो की स्लिप स्ट्रीम से इतना आगे हो रहा है भाई. देख तो सही क्या मस्त रेसिंग चल रही है यार. ओलोंजो पर्पल लैप्स मार रहा है. पर्पल सेक्टर 1 आया वो. अभी क्या होगा? They are going to push flat out. Piastri is sad यार. कितना अच्छा क्वालिफाइंग. सच में यार. Qualifying इतना अच्छा Starting किया from था यार. P8 यार. Piastri now to P20. I so wish Piastri does a Sakir Grand Prix of Perez. P20 P1. इतनी भी अच्छी गाड़ी नहीं है ओलोंजो भाई को इन लोगों पेनल्टी मिल गई. Shit. No Mikey no. 5 seconds. ये मत बताओ यार अलोंसो को. ओहो भाई क्या यार. क्यों भाई? इतने दिखाओ मेरे सालों को क्या बाद penalty 11 थी. साल बाद बेचारा पोल पोजीशन पे आया. ओ उस पे फर्स्ट रो पे आया. Is it? Am I right? Where do you even remember when was the last time Alonso was on first row? Not on pole, but on first row. Interesting. Nah. सुंदरम को पक्का पता होगा ये F1 स्टैट्स गुरु हाँ, ये सुंदरम को. को सुंदरम को पता सब रटा हुआ है. पता नहीं क्या खाता है वो. उसको सब रटा भाई. भाई मैंने क्विज करा था. There were 180 हाँ. people who participated and he won the fucking quiz. Like the entire quiz. And he was never like 80% behind. Like 70-80% उसके हमेशा क्वेश्चन राइट होते थे. भाई साहब अलग लेवल आदमी है. कितना गैप है? अच्छा, still not 1 second. It's less than 1 second. But now it's the third lap. DRS must be open now. Huh? DRS must be allowed now. Yeah, DRS is enabled.
What happened with Lando Norris as well now? What happened with Lando Norris now? Why is he in pits? Oh, come on, yaar. No, he Come just went on, copy. I don't want McLaren to be like that. Yeah, sorry. No, yeah, Alonso is all about the penalty and he just said copy. That's so unlike him. ना Alonso तो गाली देता रहता है. अरे गलती उसकी थी ना. स्टार्टिंग पोजीशन तो वो सेट करेगा, कोई और करेगा. But yeah, Charles Leclerc has taken like 3 positions up, but Max Verstappen is just 2. Is Max Verstappen saving his tires or something? अरे Verstappen आराम से जाएगा. Verstappen को कोई. But why did Norris pit? I didn't hear that. I mean, it was just Karan Chandok, you know, griefing that the pain of McLaren, but उसके अलावा कुछ नहीं था. अच्छा गीत भाई वो मल्टी व्यूअर का मैप दिखाना है क्या लाइव स्ट्रीम पे? Perez, भाई Perez, yes. अरे गया लॉकअप किया. यस ये अपना आया. देख अलोंसो लेगा इसको. लॉन्डे नया good, very good. I didn't expect him to do that there. भाई ले गया पेरेस. हाँ, ले गया. टायर लॉकअप कर लिया बंदे ने. थोड़ा एडवांटेज ले लिया. क्या हुआ भाई तेरे साथ? How out he is? अच्छा, on the left hand side probably. Oh, reaction time Perez का better था, but somehow he was not ahead. Why is that happen, bro? Positioning of the car probably. Yeah, or sometimes क्या होता है कि you go, it's just not about the first gear, it's about like the second and the third gear shifts. And sometimes क्या होता है कि other teams you just like तेरा second और third upshift इतना अच्छा नहीं होता. So there are 2 stages of a getaway. The first is the reaction time and the second is the second and third gear upshifts. So like for example 2021 में we would normally have a better pull in second and third gear compared to Mercedes in the first gear. Am I right in thinking that is it something related to throttle mapping or something? Yes, it is related to throttle mapping, engine gear ratios, stuff like that. Got it. And also it depends कितना. He's not really behind, is he? He's keeping up with them. अपना Alonso भाई जा रहा है उसके पीछे. हाँ, but that's what I said ना, 1-2 लैप लगेगा to go out actually. सौमित क्या बोल रहा है भाई? You are changing your team every second. This is not where I. भाई तू McLaren का कैप पहन ले. वो लोग पीछे है. हाँ, तू वो पीछे है. वो हक गया आज. ले भाई McLaren का पहन लिया. भाई फर्नांडो के दिमाग देख भाई, उसने उससे लॉकअप करवाया तो अभी थोड़ा टायर उसका गया. खुद का भी हुआ था भाई. फर्नांडो खुद का भी हुआ था. फर्नांडो ने नहीं किया. फर्नांडो का कहाँ था लॉकअप? पूरा पेरेस का ही था. अच्छा, बहुत सारा धुआं था तो मुझे लगा फर्नांडो का भी हुआ होगा. But Charles Leclerc is breathing down the neck of Pierre Gasly. I don't like this pink car. Even Russell is keeping up, yeah. Russell भी ज़्यादा पीछे नहीं है. And this is what I mean. अभी सब लोगों का pace race में बहुत similar है. So you are not seeing them just pull away, you know, like you see in normally other races. Maybe the pull away person is like on 11th position. He's now clear of both Haases. He's now clear of both Haases. I think एक लैप के अंदर ही दोनों को निपटा दिया उसने. दिखाया नहीं हमको. अबे क्या दिखा रहा है यार टीवी वाले? कोई एक टीवी वाले Leclerc को दिखा रहे हैं. इतने सारे फाइट्स चल रहे हैं. हाँ यार, कभी-कभार खराब हो जाता है इनका. होता है. चार्ल्स भी धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है, मनीत बोल रहा है. अच्छा, ये गैसली के आगे हैमिल्टन है. So he's getting the DRS for that. वो तो ठीक है, बट हैमिल्टन बहुत ऐसा उसको देख के बुरा लग रहा है यार. और पता है मुझे ना एक चीज का बुरा लगा. मुझे ना, मैंने कभी हैमिल्टन को इतना ऐसा बोलता हुआ नहीं देखा, पर हैमिल्टन ने इस बार बोला कि मेरी बात नहीं मानी मेरी टीम ने, मेरे को अच्छा नहीं लगा. ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हैमिल्टन इज ऑलवेज अ लीडर ना. हाँ, ये बात उसने गलत की, लेकिन आई थिंक
even a leader Sorry, has to sorry. give a kick on the ass sometimes, you know. So I thought you do it in private, not in public. Wash your dirty laundry in your wash basin or house. in your washroom. Don't wash it in front of everybody. Uh, How many caps do you have? oh, how many caps do I have? Comments. Yeah. I have 6 caps, and I aim to get all 10. Obviously, my brother lives in Australia, so he gets every for me. So he's going to Australian Grand Prix probably. So if he goes, I'll get him the next 4 caps as well. We'll probably ask him to do if you are gracefully with us in Australian Grand Prix as well. So अपन उसको बोलेंगे ट्रैक साइड से लाइव करेगा वो. अरे मजा आएगा. आज अरे नीरज I भाई. was Yeah, हाँ sorry. नीरज भाई. So I was with Neeraj Bhai today. He was at actually the track side of Jeddah Grand Prix. He देख doesn't भाई do this. Alonso is keeping up. Alonso is keeping up. मुझे लगा वो तोड़ देगा DRS. पेरेस तोड़ देगा. पेरेस लेके नहीं जा पा रहा for some reasons. Perez ये देख fastest भाई lap by the way. चार्ल्स on Gasly. या. अच्छा. गैसली को ओवरटेक मारा, उसी के बाद एकदम हैमिल्टन को ओवरटेक मार रहा ना. These softs will go very 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 soon. ये मैं बता रहा हूँ तेरे को 13 या 14 लैप पे वो पिट स्टॉप मार लेगा. 7-8 कौन? लैप्स बचे हैं बस इसके पास, लेक्लेर्क के पास. He needs to overtake Hamilton in this lap itself. McLaren currently winning the last place award for the second week running. Yeah, bro. Yeah, I didn't. तभी तो मैंने डाला ये कैप. By the way, एक थोड़ा कैप उनको किसकी moral है? support के लिए. रिकार्डो की कैप है bro. This is not even Lando Norris. This is number 3 Ricardo. Just realized. आपके लैपटॉप पे नहीं चल रहा भाई. इज द कनेक्शन स्लो. दैट इज द ओनली रीजन. इसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता. मनीत यार इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है भाई. भाई मुझे नहीं पता देते, सॉरी. मैक्लेरन इज द न्यू विलियम्स. यार ऐसे मत बोल यार. ऐसे मत बोल. उनका अपडेट आने वाला है. थोड़ा होप वैसे रखो. देखा जाए तो मैक्लेरन इज द सेकंड most successful team in Formula 1 and Williams is third, so probably it's okay in that perspective. So Alonso won't get podium. Why won't Alonso get podium? Alonso is good keeping up. भाई Alonso मिलेगा भाई. पोडियम तो जरूर मिलेगा. ये अपना आया Verstappen भाई जो के ऊपर हावी हो गया. I'll try that you asked earlier. The track. हाँ वो डाल ना. ट्रैक मैप टू डाल. मैं पूरे ट्राई जनता करता को भी मजा आएगा. मैं ट्राई करता. तू सही बोला भाई. तू सही बोला आनंद. एकदम सही बोला. आनंद ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था ये सब होगा करके. बट और ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे 5 सेकंड की पेनल्टी. या सही बोला तू. हाँ so it's very important for him to build that gap to Russell. So if I was Perez, I would actually slow down. Why would you slow down? If he slow, because then Alonso would not be able to go clear of Russell. Sorry, कम एक क्योंकि मिनट अभी टीम को सुनने लग गया. हाँ क्या बोला वापस बोल. शुभ क्या बोला वापस बोलना. No, so the more Alonso can build the gap on Russell before he pits, अगर उसको एक 8-10 सेकंड कर लिए तो he can take a 5 second penalty and still come ahead of Russell. And basically because Perez is going faster, Alonso can also go faster with him. समझ में आ रहा है? मैं समझ रहा हूँ. I can understand. If Perez goes slower, I mean, of course, he is at the risk of Leclerc ले गया. Sorry मैं तेरी बात काट गया, but Leclerc ले गया. नहीं Leclerc को लेने दे. अरे वाह. बहुत बढ़िया भाई. Leclerc बढ़िया भाई बढ़िया. सही बोला बहुत बढ़िया. ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग हैमिल्टन को मिल गया. वेविंग ऑन द यार हैमिल्टन नहीं करता ऐसी चीजें यार. कम ऑन. क्या हो गया हैमिल्टन को. फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है हैमिल्टन का भाई. हाँ फ्रस्ट्रेशन तो दिख रहा है. लेकिन हैमिल्टन का हार्ड टायर है याद रखो. तो he will come alive in the second half of the race. मैं ट्राई कर रहा. Apparently Hamilton is complaining about the hard compound tires.
प्लीज यूट्यूब गॉड, आई एम सो सॉरी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज वार्निंग दे के छोड़ देना. The grip socks. Yes, please. Track map डालो. मनीत सिंह की ख्वाहिश पूरी हो गई है. ट्रैक मैप आ गया है. Now everybody can enjoy and see who's where. भाई ये अलोंसो ना बहुत बढ़िया. When Checo is pushing. सही बोल रहा है भाई. हैमिल्टन को फ्रस्ट्रेशन आया है, गाड़ी बकवास चल रही है, कूलेंट चली गई है, तो ये सब हो रहा है भाई. हाँ, दिख रहा है कहाँ जा रहा है, सब कुछ कहाँ जा रहा है समझ में आ रहा है. बोलता है ना 7.5 ही लग गए अपने. 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को 7.5 ही लग गया. मैक्लेरन को देख के बुरा लग रहा है देख के. हाँ, रेस honestly I thought it would get boring, लेकिन देख भाई, there are a lot of battles happening on track. You have Verstappen, Perez versus Alonso, whom they are constantly pushing. Russell versus Stroll, they are still quite close. Stroll and Sainz are still close. अभी आया भाई पेरेज और हैमिल्टन पे आया. सॉरी, वर्स्टैपेन हैमिल्टन पे आ रहा है. One of my very good friends, Suraj, just texted. Suraj bhai is an amazing person. He is the marshal in FMSCI, the Federation of Motorsports Club of India. He is a very senior member there. Even senior member Nitin Jacob sir. So he's a very good friend of mine. He invited me to Formula E as well. But मस्त बंदे हैं दोनों यार. मैं अकबर इब्राहिम सर से कभी नहीं मिला यार, उनसे मिलने की इच्छा रखता हूँ. गौरव गिल सर, everybody. Anyways, coming back to the Formula 1 race. अभी पेरेज में माता आ गई है. Now he is तोड़ दिया DRS यार, तोड़ दिया DRS. हाँ. But I don't know if, let's listen. भाई वेस्ट हैमिल्टन ने जो गड़बड़ वाला हैमिल्टन ने टायर. Oh no, because मैंने, sorry to cut you there Geet, because I was listening to Alonso's team radio and the feedback they got that the hard is not like a good tire. Yeah, because Hamilton is using hard ना. So Hamilton का जो तूने बताया ना अभी कि Hamilton का अच्छा नहीं चल रहा हार्ड पे. So this is what everybody is up and down the grid talking about. क्या बोल रहा है शुभम, तेरे को बोल रहा है शुभम भाई, तुम बोल रहे हो कि मैक्स अब 7 साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा, ऐसा बोल रहा है कि तू? मैं सुना नहीं तेरी बात. नहीं मैंने नहीं ऐसे बोला भाई. टाइम है मैक्स को. दिस इज अ वेरी कंपेरेटिव सीजन. तो देखते हैं. इस साल तो जीतने की बहुत चांसेस है, अगले साल देखते हैं. सो इट्स नॉट अ इजी गिवन कि भाई 7 साल जीतेगा. और साथ ही कि भाई 8 भी जीत सकता है, टाइम अच्छा हो तो बंदे का. Hamilton and Verstappen. Yeah. And Shumi. Alonso जीतेगा या नहीं? पता नहीं यार. अभी 5 सेकंड पेनल्टी से it's just make it harder. Bros, what I'll do is I will switch to that for some time and then we'll switch back to that after some time. क्यों ट्रैक मैप का कुछ हुआ क्या सीन? I don't know. I just don't want it to happen. That's it. Max Verstappen breezing past. Oh my God! This give me a glimpse of 2021 Max Verstappen versus Lewis Hamilton. But unfortunately, Lewis Hamilton giving. Leclerc भाई कर क्या रहा है? 135.1 बना रहा है, which is not bad on a soft. 135.1. Ocon is 135.9. क्या चला रहा है भाई Ocon? 135.8 Sainz के भी टायर चलेगा यार. Like Leclerc is still faster on a soft compared to the people in front on the. No, but what you're seeing is, look, Leclerc has DRS and anybody else doesn't. Like, for example, when you compare with Sainz doesn't have DRS as well. If you want to compare with anybody, look at Perez, yaar, 134.1. Well, Leclerc is 135. I mean, Alonso doesn't have DRS and he's doing a 134.9. So. Yeah, that's true as well. Oh, fuck. Perez is a 134.0.
He's like, Exactly my point. Perez has clean air also, na. So that's also a thing. yeah, but 3 seconds behind is not too bad, you know. But I Current thought, I mean, now we can see how mechanical grip is something, and then going on straights is something that the balance between the drag and the balance between the the low drag. As in, Aston Martin has more drag Tata, in it, right? Ambani, Adani, please support Jihan. The भाई मैं तो streamers are बोल रहा using. हूँ एक फंड बनाते हैं, 100 अरे रुपए देख डालते वो हैं. क्या बोल रहा है श्रजान दीक्षित वो क्या बोल रहा है that other streamers are also using the track map. कौन स्ट्रीमर जो सृजन, एक बार मेरे को बताना यार. मैं डाल तो देता हूँ, बट इफ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. समझो यार, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं जहाँ तक आए हैं यार. नहीं क्या आपको भी मजा आता होगा देख के हमको, तो वापस जीरो से चालू करने का मन नहीं है. बस इतनी सी बात है. डालता हूँ, मैं डालता हूँ, बट सजन बताना मेरे को कौन कर रहा है यार, ताकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आऊँ. क्या बोल रहे हैं अलोंसो भाई? बोल रहा मैं ठीक हूँ, मेरे को छोड़ दे, लॉन्ग चलते करके. हाँ, टायर्स फील गुड. अरे सौमित मैक्लेरन को सपोर्ट कर रहा भाई, तेरा भाई मैक्लेरन को प्रोत्साहन दे रहा, कुछ नहीं. और मेरे को क्या करना है? मेरी टीम तो तुम लोग हो यार, तुम तो प्यार हो. नहीं क्या करे यार, कोई रेसिंग टीम. स्टैटिस्टिक्स चैनल मास्टर सुसु बोल रहा है रेसिंग स्टैटिस्टिक्स चैनल यूज कर रहा है. ठीक है, मैं चेक करता हूँ, लिखता हूँ उसका नाम. He is noted by the FIA called Geet for an infringement. कर सकती है वो. अरे तू ऐसा मत बोल रहे. हाय कुमार आदित्य, व्हाट्सअप कुमार आदित्य, कैसे हो आप? ब्रो, इज देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर अस टू वॉच इन इंडिया? सॉरी ब्रो, यू हैव टू पे. सजन बोल रहा है, बट डू ऑन ऑफ. ओके ब्रो. भाई मैं तो साइंस पर इसको सपोर्ट कर रहा हूँ. ओके. ए गूफी तू मरवा रहा है. अच्छा, पिट से कौन आ रहा था? स्ट्रोल पिट किया क्या? So a lot of people have pitted. I think yes, Stroll did pit. They Yeah, Leclerc dummied. has not pitted. It's already been 14 laps. Yeah, they 13 dummied. laps. They dummied the Aston Martin. That's what Karan is saying. Okay. Arey, somebody subscribe to you. Thank you, Ankit bhai. Thank you, Ankit bhai. Yeah, bro, Anuj, I also feel bad. भाई रेसिंग स्टैटिस्टिक्स यूज करता है इस ट्रैक मैप को. ओके. Has Shubh अरे तेरे worked से on पूछ रहा है कोई trackside? कुछ. I haven't worked on trackside, but I've been there on trackside for support for 2 races. Silverstone Grand Prix 2021 and Monza Grand Prix 2022. Nice. Both these good races, huh? Must have Shubh enjoyed. bhai is from Red Bull, right? हाँ भाई, काम करता था Red Bull से. Red Bull के लिए 2 साल. I'm not with Red Bull Racing right now. Right, so he's from F1 aerodynamics side. हाँ सौमित, क्यों नहीं? टू स्टॉप स्ट्रैटेजी तो बहुत डिफिकल्ट है. वैसे हो सकती है यार, व्हेन वी सी अगर हार्ड इज नॉट डूइंग गुड, देन टू स्टॉप कैन बी अ प्रोबेबिलिटी. पराग इज डूइंग. But everyone's going to the hard, no? किनसे अभी स्ट्रोल ने पिट किया? स्ट्रोल कौन से टायर पे है? Yeah, Stroll hard पे निकाल के लेके आया है. हाँ. Even Pierre Gasly is on hard now. But I think the leaders will wait for some time before changing the tires. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. अगर हार्ड अच्छा नहीं है तो सीन क्या है? Everybody's expecting hard to be good. Okay, yes, I had seen the community post of Geet by earlier introducing you. पढ़ते हैं लोग भाग मेरे, मैं जो बोलता हूँ सुनते हैं, पढ़ते हैं लोग भाग. थैंक यू यार हर्षिल यार, अच्छा लगा सुन के यार. मैं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूँ a lot of time.
But that's all autocorrect. That's not me, bros. That's all autocorrect. Today also, the message that I wrote on Instagram, front brown हो गया. अरे रो था. I had seen the community post of Geet Bhai earlier introducing you. Yes, Harshil Bhai, thank you. Aston is checking hard tire. Okay, what? Okay, so the Ferraris are going on the hard, on Right. science. The pit lane time is good as well. I mean, the pit stop time is good as well. 2.7, nice. It's decent. 2.7. Max Verstappen, Charles Leclerc is on 4th. Max Verstappen is on 5th, bro. Storm's coming. Storm's name is Max. Yes, Super Max. It's P5. He's come out ahead of Lance Stroll. भाई Ferrari ने strategy अच्छी की. Oh my god. This is where they turn their season. Nice. यार Charles Leclerc on soft, Max Verstappen on mediums. Has Charles Leclerc's softs gone peak? Max Verstappen is 0.5 seconds faster than Charles Leclerc. भाई it's an actual storm. एकदम सही बोला था ये. कौन बोला storm के बारे में? एकदम सही बोला. यश भाई बोला. Leclerc pitting. Leclerc pitting. So एक बात बहुत अच्छी नोट करो स्ट्रैटेजी के लिए गीत भाई कि हाँ it भाई. looks like the overcut is more powerful than the undercut right now, because for example Sainz extended did an Sainz, overcut, yeah. so it looks Yeah, like the but- overcut is more powerful in this race. But okay. होता है, I'll. I mean it's a possibility that the overcut is more powerful in this race. Yeah, Just watch out. that's a better statement to say because multiple things matter, na. That's it. See, Leclerc also went ahead of Stroll. He's jumped Stroll. भाई स्ट्रोल के लिए बहुत बुरे हैं हार्ड टायर्स. स्पेसिफिकली स्ट्रोल के लिए बहुत बुरे हैं. क्रॉफ्टी भी यही बोल रहा है. सृजन बोल रहा है येलो फ्लैग आया. कहाँ है येलो फ्लैग? दिखा क्या? हाँ येलो नहीं. फ्लैग सेक्टर 2 डबल येलो. कुछ बड़ा sector हुआ. 2. कौन गया कौन हिल नहीं रहा है. स्ट्रोल क्या? स्ट्रोल Stroll स्टॉप करने को बोला. स्ट्रोल नहीं रहा है. क्या हुआ Stroll? भाई नोबडी. यार अपन फरारी को गाली बकते रहते हैं. नोबडी, कोई नहीं अछूता भाई. रिलायबिलिटी से कोई नहीं अछूता. सबकी गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम है. एक साल इस रेगुलेशंस को होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. एवरीबॉडीज कार हैज सम और द अदर प्रॉब्लम्स. स्ट्रोल रुका देख. I think he stopped somewhere around 12 or 13. This is what very 13th में. everybody will pit. Oh, everybody is going to come and pit. It's a safety car. Max Verstappen ले गया भाई. Max Verstappen ले गया. Max Verstappen ले गया. भाई मैंने बोला था ना भाई. जो गलती पेरेज ने करी थी लास्ट टाइम वो लेक्लेक कर गया. अरे यार शिट यार. ओहो. ओ गाड़ी में आग लग गई भाई. नहीं गाड़ी में I think it must be the front calipers which are hot. Because see where he is putting the कैलिपर मतलब ब्रेक के अंदर होता है क्या? या सस्पेंशन में होता है? I think it's नहीं सस्पेंशन नहीं brake caliper. Brake They are used for तो- cooling the अच्छा brakes. अच्छा. The Because brake he's cooling. putting the yeah. Nice. Thanks, we have a in-house expert now. हमको बता पा रहा है. थोड़ा बहुत इतना तो इधर उधर की Crofty को भी बात नहीं है. पता था. तेरे को पता है भाई. नहीं भाई Crofty भाई legend है. Fuck man. क्या अंदर गया क्या? Has Max Verstappen pitted? नहीं करेंगे pit भाई. But Perez ही पिट नहीं किया अभी तक. तो वहां पहुंचा भी नहीं है. Yeah, that is very interesting because it is too early to pit. Russell is boxing. It is Everybody quite will early to pit. Yeah, but if they pit, they're going to struggle to extend to do like what? 32 laps on the hard? So Perez is coming. Yes,
I mean, hard is not a Yeah, problem for everyone's everybody. It's probably the problem for. yeah, I mean, yeah. look at Lewis Hamilton's time, यार. अबे हाँ, 135.0 यार. तो देख तो सही 135.0 मार रहा है वो. तो इतना बुरा भी नहीं है. मतलब अगर अपन देखें तो इतना बुरा भी नहीं है. Red Bull 2.4, nice. Shit यार. Ferrari की रेस. Sergio Perez is best is gonna for win. Alonso भाई. Alonso भाई के लिए देख, it's very useful because it's 5 seconds penalty. 5 seconds is just done. He might not lose any positions. Can he do that? Yeah, I mean, yeah, he yeah. can do that, right? He just served his 5-second penalty. Not bad. Not Neutralized. bad. Not bad. I think. But I the think. bigger problem is Verstappen. I mean, he's already done. Wow, yeah. But the people it has gone really bad for are the Ferraris. The Ferraris. Ferraris are effed. I don't know, but right now it looks like Ferraris are effed. Yeah, I mean they lost out the most because Verstappen jumped both Sainz and Leclerc. Yeah. I mean, he jumped both Sainz and Leclerc. So he didn't have to pass the two other fastest cars around him, which were ahead of him. Verstappen is up to 4th already, yeah. And then now Sainz. Karan pointed out a very interesting point. Yes. Did you hear him? Huh? Yes. Right? जनता आपको क्या लगता है? Will Lewis Hamilton create problems for Sainz, Verstappen, Russell or Alonso? I mean, पता नहीं. देख भाई, मार्टिन मंडल बहुत अच्छी बात बोल रहा है. He was completely off the racing line. It did not require a safety car. लेकिन भाई हैमिल्टन का पॉइंट सुना कि हैमिल्टन इज द ओनली वन ऑन द मीडियम्स नाउ. ना या करण का पॉइंट एकदम सही था. I also felt that कि बंदा तो ठीक बात बोल रहा है. He is the only guy who's on mediums now. I mean, at least in the top 10. But by Lewis Hamilton to do anything, I think 30 laps. Again, the same point that David Crofty is saying that he has got to do like 30 laps on medium. Is that okay? On this track, maybe yes. Maybe. वैसे अगर देखा जाए तो 18 लैप तो लेक्लेर्क ने भी सॉफ्ट से मारे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. है ना? एंड अच्छे टाइम पे मारे हैं यार. और ये सही बात बोल रहा है करण अभी कि भाई we've seen the struggles on the hard warm up. अभी मीडियम पे ये मजेदार स्टार्ट ले सकता है. At least the first 2 laps might be very like कि भाई he can attack both of them, you know, like Sainz or Verstappen. Can he do the same thing which Alonso did in Monaco last year? Yeah, but you know this is not Monaco. It's very Herschel. It's very hard to defend. Not Monaco. It's not very hard to. It's very hard to Norris. defend here. Norris अब Monaco पिट कर रहा है. अरे ये गाड़ी अंदर डाल दो यार. ये गाड़ी अंदर ही रखो यार. इसको बाहर ही मत निकालो. तू अपनी नई गाड़ी लेके आ डायरेक्टली जैक ब्राउन. ये इस गाड़ी को लग गई किसी की आंख. अल्फा टावरी के लग ही लगता है. वक्त बदल गया. बोटास आल्सो P18 यार. दोनों अल्फा रोमियो नीचे है भाई. पता नहीं क्या हुआ. क्या हो रहा है ये यार. एल्बॉन 12th पे अच्छा लग रहा है देख के. मैग्नुसन भी 11th पे है. एकदम स्वैप कर ली पोजीशन मैग्नुसन और Sonoda 8th. Nice. Very shocked to see Sonoda on 8th, frankly. Huh? What does this mean? अरे पैट्सी कुछ पूछ रही है. Bad for Charles and good for Max. I'm sorry for asking. How is it bad for Charles? क्योंकि
if you see that Charles and Sainz both were ahead of Max, and because they pitted earlier. Yeah. 1 second. क्या लेक्लेक क्या बात कर रहा है? 1 सेकंड मेरे को सुनना है. Ooh. Sorry, I didn't understand what was the conversation. So क्या होता है, there is a safety car line. Okay. और उसके बाद basically you have to follow the rules of slowing down. It's before the pit entry and after the pit exit. So before that you don't have to follow the regulations. And Charles basically followed the regulations when he did not have to. But the race has started. Yeah. Ooh. Ooh, look at the two Alpines. ठोकेंगे. 2022 again. 2022 वापस हो रहा है. Who's ahead? Ocon is ahead. हाँ भाई, Ocon करेगा डिफेंड. भाई पेरेस चला गया. पेरेस चला गया. पेरेस 1.5 सेकंड ऊपर चला गया. पेरेस इज गॉन. और एक सेफ्टी कार मिलेगी मुझे लगता है इस रेस में. होगी और एक सेफ्टी कार. बट क्रैश से मिलेगी, रिलायबिलिटी से मिलेगी. पता नहीं भाई, इतना भी बाबा नहीं हूं मैं. बस फीलिंग आ रही है, इसी वही बोल रहा हूँ. भाई बस रसल को ओवरटेक ना कर ले यार ये बस. भाई वर्स्टैपेन भाई मत ओवरटेक कर उसको. ओ लुक एट हैमिल्टन. लुक एट साइंस. या हैमिल्टन आ रहा है. ओ साइंस इज डिफेंडिंग वेल. बट हैमिल्टन ले लेगा उसको. हैमिल्टन के मीडियम्स बोलने चालू हो गए हैं. ले गया. Oh, look who's behind Verstappen now. On mediums. He is in the DRS zone of Max Verstappen. Not yet. Now, yes. And I don't think so Max Verstappen will fight Lewis Hamilton getting overtaken. I mean, maybe yes, because he's Max Verstappen and he's Lewis Hamilton. But मुझे लगता है कि Max Verstappen को अपने टायर्स की एज बचानी पड़ेगी यार. क्यों भाई? He's on a hard. I understand, but he's not going to spoil that because he will go long. Because he will save his tire probably in the later stage of the race. These mediums will die down. जिस तरह से Lewis Hamilton गाड़ी चला रहा है ना, लग नहीं रहा है इसके मीडियम ज्यादा टिकने वाले हैं. और अगर मैक्स वर्स्टैपेन लड़ाई करने में अपने टायर बिता देगा ना, तो पोडियम पे नहीं आ पाएगा वो. साइंस ले जाएगा. That's why Sainz didn't fight in that much. देखते हैं. मुझे लगता है Verstappen will not think that way. वो भाई बोलेगा तू हट, तेरे को आगे जाने थोड़ी दूंगा मैं. नहीं, वो उसके पहले रसल को ओवरटेक मार देगा. That is very important. If Russell can hold him up one more lap. No, one second. If Max Verstappen passes Leclerc, ठीक है, वो तो हो गया. चल, will we hear the first team order of Russell and Lewis Hamilton? No. Hi Russell, this is James. James Allison मुझे आ जाएगा. James गया भाई. अरे जेम्स एलिसन आ जाएगा. सीटी तो है बीबी. ये टोटो आ जाएगा. आइलेट आ जाएगा. Can you get the fuck out of the way? Papa is coming. Oh my God. अरे लेकिन रसल भाई ने रखा है Verstappen को पीछे. मानना पड़ेगा. हाँ यार, ये रखा तो है. और ये सिर्फ पोजीशनिंग से रख पाया है. अब मेरे ख्याल में DRS एनेबल होने का वेट कर रहे हैं. Alonso रेडियो.
Tires feel very good. I like this tire. तो भाई थोड़ा फास्ट चला, थोड़ा जल्दी, थोड़ा 3.7 भगा already भाई। यार, 3.7 already behind. वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा भगा उसको, अच्छा लग रहा था तेरे को। भाई रसल से मैं इम्प्रेस हूँ भाई, वर्स्टैपेन को रख रहा है पीछे। इनका एनर्जी डिप्लॉयमेंट बहुत स्मार्ट हो रहा है यार, लाइक टू कीप द रेड बुल बिहाइंड Is something nahi, and you said the race pace हाँ is like 0.5 behind, and I अभी can आ रहा है, गया वर्स्टैपेन गया गया। गया 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 वर्स्टैपेन was यार 0.8 seconds रेस पेस ज्यादा थी वर्स्टैपेन की, कहाँ रोक पाता यार। अभी भी वर्स्टैपेन की रेस पेस पेरेस से भी ज्यादा है यार। चल डीआरएस के कारण होगा प्रोबेबली, बट अगर ओलोंजो से भी ज्यादा है ही उसकी। Another 1-2. What do you think, bro? लेकिन who is 1 and who is 2 is the question. Max Verstappen is like what 5.6 seconds behind Perez right now. AWS का वो ट्रैकर आने वाला है, पेरेज और वर्स्टैपेन को पीछे रख के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस इन 12 laps. Striking distance. Tell Josh to defend like a lion. Alonso सही बोल रहा भाई, तू सही बोल रहा। अरे भाई यार, ये मारा भाई यार, ये मारा तुमने यार, छक्का मारा यार, वाह भाई, ये मारा यार भाई, ये रेसिंग बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स है। का रेसिंग स्टैटिस्टिक्स का लाइव स्ट्रीम ब्लैक हो गया भाई, तू आराम से कर। मालिक को मरवाओगे तुम लोग, अपन नहीं कर रहे भाई, अपन इसको भी हटा रहे थोड़े टाइम के लिए भाई, अपनी पढ़ना चालू हो गई। अलोंसो का डिफेंस भी बाकी है। हाँ भाई, डिफेंस तभी होगा जब थोड़े टॉप स्पीड मैच होगी। लाइक द ओनली रीजन रसल वाज एबल टू मैच कीप वर्स्टैपेन बिहाइंड, ये देख भाई वर्स्टैपेन चला गया, अलोंसो ट्राई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको थर्ड आना है। देख भाई, नहीं I think the भाई, best why comment would of he the night burn out goes his to tires? you. Yeah. ये गया, ये he will not even try. गया गया गया, ले गया ले गया ले गया ले गया। The only thing you can hope for now is that Verstappen और Perez एक दूसरे को पुश करते रहे. They might burn out their tires as a safety car, and then suddenly Alonso has the best tires. I don't think so that's gonna happen, because Alonso, if there is a better car as well, I mean better tires as well, still the race pace of Verstappen and Perez is gonna be something else. Perez after Max overtakes him. This shows what a person is saying. अभी भाई I think मजे कर इतना रहे हैं, ऐप नहीं था, कुछ बचा नहीं वो है। वाला बेटर था। Try better, bro. अभी बैटल रहेगा बस रसल और हैमिल्टन का देखने लायक। Bro, do you think Ferrari has conceded? Yeah. Right? They're not I mean, not pushing much. conceded. It's just like they can't do anything much anymore. No, but This is realistically where they are on race pace. I mean, sorry, मैं एक बार पैट्सी का कमेंट लेता हूँ। तो पैट्सी क्या होता है कि अगर आप आगे चल रहे हो, जैसे लुइस हैमिल्टन आगे चल रहा है और शार्ल लेक्लेर्क पीछे चल रहा है, तो लुइस हैमिल्टन हैज जस्ट वन मैनूवर पॉसिबल। स्ट्रेट के ऊपर लुइस हैमिल्टन या तो लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है। वो लेफ्ट राइट नहीं जा सकता या राइट लेफ्ट नहीं जा सकता, वो ऐसे नहीं कर सकता। तो दिस इज नॉट अलाउड फॉर ओवरटेकिंग। तो वो या तो वो राइट जा सकता है, वो लेफ्ट जा सकता है। एक पोजीशन मेंटेन करनी होती है बिफोर द ब्रेकिंग जोन। ही डिड अ कपल ऑफ देम, सो दैट्स व्हाट वीविंग इज। वीविंग नहीं होती, सुई धागा लगा के वीव करते हैं, तो ये लेफ्ट राइट, सो दैट्स द रेफरेंस ऑफ वीविंग। पेरेज आफ्टर मैक्स ओवरटेकिंग द शो। अच्छा, ये पढ़ लिया मैंने। शो ट्रैक प्लीज। अरे यार वसीम मरवाएगा तू यार, मैं नहीं कर रहा यार। देख ब्लॉक हो गई उसकी यार। बाय रेड बुल को दे दो कंस्ट्रक्टर। Verstappen with the fastest lap, is it? Yes, Verstappen with the fastest lap. Yes. How both F1 and F2 races are conducted? बर्नी कॉलिंस बोल रही ना कुछ?
किसके लिए बोल रही है? 32 नहीं, वो ब्रेक फेलियर किसका है भाई? ब्रेक फेलियर एलेक्स एल्बन का ब्रेक फेलियर। एलेक्स एल्बन का ब्रेक फेलियर हो गया भाई। भाई गाड़ी पार्क कर देना भाई प्लीज, भाई अंदर मत इंजन ले गया ब्रेकिंग से भाई। कर नहीं सकता कोई ये काम? इंजन ब्रेकिंग से कम नहीं कर सकता क्या? मतलब कांट ही कंप्लीट द रेस इन ऑन इंजन No, ब्रेकिंग? no, no, no. नो? Engine braking is not braking. Engine braking is an assistive kind of braking. It's not the So primary source of braking. so for example, going into turn 1, he can't like engine brake from No, 8 to 1. no, no, no. He can't do that, right? He और cannot. turning into turn 13 तो हो सकता है नहीं, but turn 27 नहीं हो पाएगा शायद ना. It's too Nah, tricky, I you guess. you'll just be much slower. Yeah, okay, देख got it. चला रहा है बंदा, हाँ. he can slow down the car, but he cannot go at F1 speed. Yeah, got it. I mean, अपन चला सकते हैं. I mean, अपनी गाड़ियाँ, because 150 horsepower in my Polo. Yeah. अरे यार, मुझे लगा पार्क कर लेगा यार गाड़ी। क्यों करेगा? By now, I can just think of what if Charles Leclerc would have been told that earlier. Now I can just think of that. What if Charles would have not pitted, or Sainz would have not pitted? I'm sure we've seen a couple of more fights between. Once again, Bernie saying. Yeah, I mean Leclerc, Verstappen getting ahead of Leclerc very easily. We got robbed of a battle there, for sure. Sorry, I'm so sorry. Say that again because I was listening to Bernie Verstappen calling. getting ahead of both Sainz and Leclerc without a fight. We got robbed of a good battle there. अभी देख रसल और हैमिल्टन का चल रहा है. But with this, I mean, I've just Bernie Collins बोल रही थी कि Alonso has been told that you can push out, you can go all in on these hard tires, push all the way through. Hearing this, I think Hamilton can also park. I mean, can reach the end by pushing this ways. Oh on medium. yes, हो सकता है. Yeah, I think the wear is very low on these tires. He might face a little bit of drop off at the end, but should be okay. Interesting thing by Varun, yaar. I want to say, Varun has been following, by the way, the channel since a long time. Thanks for doing that, Varun. But taking this comment of yours, yaar, I can see Haas is performing. Haas is definitely performing much better than Williams, McLaren, Alfa Romeo, and Alfa Tauri. I mean, nahi kya? For a team which was, I guess, P8 last year. No, P9. P8 was Alfa Tauri. So if they from P9 to what P6, if they are, that's a brilliant thing here. So at least till the second race. By the way, I should say I've met. Okay. By the way, I've met Karan Chandok. I've met Karan Chandok. He's a fantastic guy. Amazing बंदा है भाई. बहुत ही जेन्युइन है. मैं उसके पास गया. एक सेकंड, मैं उसके पास गया. मैंने बोला करण भाई, बिग फैन ऑफ योर्स. अरे मेरा बिग फैन क्यों है तू? कह यार कितना स्वीट आदमी है यार. Oh, देख भाई रसल क्या बोल रहा रसल? रसल बोल रहा था टीम को कि अलोंसो के पास 5 सेकंड पेनल्टी है, लेट्स सेव सम टायर्स. मैं बोला भाई उसने सर्व कर ली, तू भगा, बिकॉज़ द आइडिया इज ही डजंट वांट हैमिल्टन टू अटैक. समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है भाई उसको बोलो आराम से, लाइक वो सर्व कर लिया पेनल्टी, तू भगा, नहीं तो ओवरटेक, नहीं तो हैमिल्टन को आगे जाने दो. सही बात है. सबको प्रॉब्लम आ रहा है. यूट्यूबर्स आर गेटिंग कॉपीराइटेड. अच्छा, दे गेटिंग आस्क्ड टू स्विच एफएस. वन स्ट्रीम गॉट स्ट्राइक. अच्छा, मैंने बंद कर दिया भाई, अपन नहीं दिखा रहे हैं. अब हो गया अपना जितना हो सकता था. कौन बोल रहा है वन स्ट्रीम गॉट स्ट्राइक? ये बोल रहा है यश, बोल रहा है यश. इसको कैसे पता यार?
And that's also a good यश question, भाई by the way. आपको कैसे पता? And स्ट्राइक Ladakh बस is जो there, bro. चलाता है उसको पता है। हाँ भाई Hamilton. पेरेज भगा रहा है। हाँ he's Hmm. just like But they're very comparable. Perez sector 1 purple, Max Verstappen sector 2 purple. Verstappen Perez very closely, but Verstappen is a bit faster than Perez. But Verstappen is yeah. 5 seconds. How Verstappen got from P5, P15 to P2. First, Verstappen went for an overcut, and then because of the safety car, he stayed at P4 or P5, and then he overtook Oh, look at everybody that! else. Look at that! Sergeant Haas और Sargent का battle. Oh, Haas is ahead. I mean, Haas was already ahead. Sorry. He kept his अच्छा position, battle but था यार. nice, यार. लोगन सार्जन से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फिनिशिंग इन P4 पोजीशन इन F2 लास्ट 2022 coming into Formula 1 and performing so well in just the second race competing Yeah, against one of the he's doing topmost phenomenal. driver in Formula 1 Nico Hülkenberg amazing performance यार clap बंदा ना salute honestly, Roadies salute that's respect. अरे इतना आगे मत पहुंच भाई. अच्छा इतना आगे हो गया क्या Watching race with you guys is fun. Today is my first time. Thanks, Geet bro. भाई अरे अच्छा कमेंट थैंक्स है शुभम मनीष ब्रो एज टाटा वेल से. ब्रो ये जुगलबंदी है ये जुगलबंदी है बता रहा जुगलबंदी. अरे पेरेस भगा रहा है यार. पेरेस is really matching Verstappen on race pace. right they are last lap was Perez See was multi faster 21 with Max and Checo. पहले पहले नहीं यार ये डील नहीं हुई है मैक्स और चेको. they will fight like chaos भाई. जो जब भी मैं था 2 साल रेड बुल में और जब अपना पेरेस भाई और वेस्टापेन भाई का बैटल होता था it was always a free fight. There was never any for a win. There was never any team orders for a win. In case like like he's for second, third, fourth, then yes, Checo was asked to move out of the way, but never for a win. but I think when you were in Red Bull I guess in 2021 probably is more I Yeah, assume that you were in 2021 more than 2022 right I was there for both, so not both there was not like more of 2021 or 2022. अच्छा Yeah. चलो ठीक है तो 21 के अंदर तो वैसे भी क्या फाइट थी Perez knew that I want to हाँ support them yeah exactly 22 में especially. 2 के अंदर probably you can say a couple of times and I guess more so in what Brazil उसके अलावा तो I've never हाँ seen them ब्राजील. fighting that much Max Verstappen is faster last lap Yeah, 2/10 but by how much is the question, no? 2/10 that's it 2/10 32.5 versus 32.3. I mean, not even 2/10. It's 1.5. Perez and Verstappen exchanging fastest laps like Uno cards. Of course, Shubh bro as well. Thank you, Manish. By most welcome. अभी देख हैमिल्टन must have damaged his tires. रसल को कोशिश करने में. I think he's already like 8 seconds ahead of Alonso. So I think they keep because nobody is. No. I meant to say अपना हैमिल्टन और रसल का battle. Okay, sorry. So yeah, you're saying that Hamilton is not pushing anymore. This is what you're saying. Exactly. Yeah. Yeah, but yeah, you're right. But He's not. ये भाई ये देखा क्या चल रहा है रेस में. Sorry. अपना दोनों रेड बुल 1 सेकंड फास्टर है पूरे ग्रिड से. 32.5 versus second fastest Alonso 33.6. 33.4 from Russell. 34.1. Ferrari's race pace is miserable. Ferrari are 2 seconds behind, literally, like more than a second and a half. Achha, tell me, bhai. I've seen. I mean, looking at as much stat I can remember. 2021 के पहले the dirty air following but 10 meter तक 45% था dirty air का and 2021 के बाद में I think this was 18%. तो ये 20% तक तो वन फिगर रह जाता था. अभी जो 2 सेकंड का गैप है, how much meter is 2 second gap?
What if you can give me an insight on this? If you know this, obviously. Well, it's more than. I think it's more than a car length. 2 2 seconds is a second car is more length. than a car length. It should be A around car 2 length meters. is what, 5.5 meters. Yes. So I think it's about a car length. 2 seconds. Because Got it. usually you see, about a car length. I think I 1 don't second know is about exactly. a car length. 2 Yeah. second probably 2 car lengths or something. Why Yeah, am I saying something this? around that. Why am I saying this is because 10 meters is what was the principle Principle. taken. But anyways, very small. Let's This year concentrate on the F1 is race. 18 drivers fighting for third podium position because 1 and 2 are implied to be Red Bull. I agree. Sorry, एक which second comment? faster है यार. Yeah. Right. Good observation, Sushant. भाई आपको रेड बुल फ्री में मिलती थी. हाँ बहुत बहुत Red Bull फ्री में मिलती थी. हर फ्लेवर. Because behind like understood. Me understood. But the timing is all about track pace. How's Lewis Hamilton doing? Lewis Hamilton is doing good. For सब लोग some मैनेज reason, कर रहे हैं यार अभी. the managing the tire, but I mean, when you see Lewis Hamilton Except का pace, except for the Red Bulls, everybody is just like managing to what नहीं Alonso is ब्रो, doing. मुझे एक बात बता. लुइस हैमिल्टन 33.8 है एंड साइंस 38.9 है. लुइस हैमिल्टन मीडियम्स पे है 15th लैप पे, 15 lap mediums, 15 lap age old mediums, and science is what, 18 lap old hards. Do you think it is what, 16 laps to go? Will they ever fight in the next No, 16 not laps? really. I mean, until and unless Hamilton has a massive drop off on the mediums, which is very unlikely, and even if they do, I don't think the Ferrari has the pace to. There's not enough pace delta between the between the Mercedes and the Ferrari for the Ferrari to pull off the overtake. Sorry, I think I don't. I will not take your comment, Krish. I'm so sorry. Please don't read Krish's comment. I don't like when people use capital. You can't shout on a. He's a guest here. He's a guest on the channel, and you can't shout saying that he should answer your question. Ask properly. सब लोग normally answer कर question पूछ रहे हैं ना, अपन भी normally answer दे रहे हैं. भाई लोग इतने हैं, क्या ऐसा चिल्लाने की जरूरत है? आप आराम से लिखो, जवाब देगा Krish. But please don't use Vaibhav capitals. Sharma also with full on caps. हाँ मत कर यार कैप्स यार. नहीं, मैं नहीं ले रहा किसी का कमेंट विद कैप्स. Are you still in Red Bull, Shubh? No, I'm not in Red Bull. अगर मैं होता तो ये कर नहीं पाता. तो let's say I'm not in Red Bull. अगर मैं होता तो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता अभी HR से. फैक्ट्री में बैठा होता है, शुभ मिल्टन कीन्स के अंदर देख रहा था. गीत भाई ये देखो ये चल रहा है यहाँ पे. तो रियल पेस इज दिस. फ्लोर बनता है अपना. अच्छा बाय द वे तेरा सपना ही पूरा जाता फ्लोर देखने का तब तो. Yes. टेल पोजीशन. ओके देयर इज. भाई अपना क्रिश भाई अपोलोजाइज कर रहा है. रिस्पेक्ट ब्रो. No problem, bro. I understand. Now the question was, have you ever met these Verstappen, Perez, Horner, etc.? हाँ भाई दो बार मिला हूँ. हाँ यस, 2 बार मिला है मैक्स से. मैक्स का सेल्फी भी लिए है 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद. ये इंस्टाग्राम पे डालने वाला है कभी ना कभी. मैं इसको पुश करता रहूंगा जब तक नहीं डालेगा तो सेल्फी हो. डालना है यार, मेरे को बहुत देखने. अच्छा मेरे को डीएम कर दे, नहीं दिखाना किसी और को, मेरे को डीएम कर दे प्लीज. Should might be a personal question, but mid season development में कितना टाइम और रिसोर्सेज जाते हैं टीम के लिए? So right now the teams would have already been doing their update package for, I don't know, race 7, race 8, like the European season. और Red Bull का भी इतना विजन होगा कि अभी ज्यादा बजट रहेगा नहीं, so they would be moving on to next year's development very early on. So there'll be one update as of what I've heard कि भाई अपडेट आएगा रेस 4 में, और बाद में यूरोपियन सीजन बार्सिलोना में रेस अपडेट आ सकता है. नाइस.
and then that's pretty much it. Like they will only bring an upgrade if it's required. Like there'll be track specific upgrades like Monza, Mexico, Baku, but that's pretty much it, I think. Mate, what was your But job Red at Bull Red is a Bull? team. I was an aerodynamicist, Roshan. I've Let's 2022 do के गाड़ी this. पे I used to work. Shubh, after you answer this one, let's do this. If you have couple of minutes after the race, we can talk Yeah, all yeah. about it because it's just 20 minutes to the race now, not more than that. Okay, sorry to interrupt. No problem. चल चल So it's Perez, Verstappen, Alonso. Okay, what I'll do is I'll do this. देख ले भाई. देख ले भाई जल्दी से देख ले और छुपा ले. हाँ, तू देख No, ले but आराम this से. is fine. This is fine. फाइन क्या? Should be okay. चल ठीक है चल No, ले. because this is like public information anyways, as you हाँ, said. You're मैं not लॉगिन getting भी नहीं कर structured. रखा भाई. देख यार, सबको दिख रहा है वैसे भी. बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्यूचर के अंदर लिबर्टी मीडिया को गुस्सा चढ़ेगा. वो बोलेगा जिसने अपनी स्ट्रीम के ऊपर फॉर्मूला 1 का लोगो यूज किया सबको बैन कर दो साला. बर्नी एकल्सन की आत्मा आ जाएगी मरने के बाद उसके. सॉरी, आई डिडंट वांट टू बी ऑफ दैट ऑफेंसिव टू बर्नी एकल्सन, बट व्हाटएवर. स्ट्रीम मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो रहा हूँ. गीत भाई थोड़ा चला लो. मैं अपने पोजीशन चेंज कर रहा हूँ so that I can enjoy the last couple of laps in case as a safety car, and I can take couple of questions after the race so that we can extend this session. So give me a आजा second. कोई भाई आराम से चिल. यार ये वैभव अपन है ना, शुभ से बाद में पूछेंगे सब उसके वाले सवाल. अभी अपन रेस के बारे में बात करते हैं. वर्स्टैपेन ले नहीं पा रहा है पेरेस को. अभी भी 4.3 सेकंड्स बिहाइंड है पेरेस से. वैसे तो वो 0.1. ओह, मैक्स वर्स्टैपेन को अभी भी ड्राइव शाफ्ट से प्रॉब्लम हो रही है. BREBAL stands for brake balance. Nice. Alonso 13 seconds behind. Yeah, 13 seconds behind, bro. So Alonso is 13 seconds behind. Then we have Russell 4 seconds behind. Hamilton, I don't think so. This is helping him that much. Plus race के end stages के अंदर hard will be much better than medium. So I can imagine वैसे 4 सेकंड साइंस ले नहीं पाएगा यार. 4 सेकंड साइंस पीछे है हैमिल्टन के, लेके नहीं जा पाएगा. आई डोंट थिंक सो. बट साइंस एंड लेक्लेक भाई उनकी रेस तो आज खराब ही हुई है. मैक्स वर्स्टैपेन को वैसे रोक नहीं पाते, बट क्या पता लुइस हैमिल्टन के तो आगे हो ही सकता था साइंस या लेक्लेक दोनों में से एक तो. ओह, जो गुआन यू सार्जन को ले गया. अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सुना था साइंस ले जाने वाला था, वो सार्जन ले जाने वाला था हैमिल्टन को. वर्स्टैपेन बोल रहा देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओह माय गॉड. हाँ, गीत भाई विच लीग यू आर इन. भाई अपन ने अपनी लीग बना रखी है यार, आप भी आओ ज्वाइन करो, मजे करेंगे लीग के अंदर. बट मैक्स वर्स्टैपेन मजे नहीं कर रहा राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम. What is your favorite track? Your favorite track is Marina Bay. My favorite track is Suzuka in Belgium, Zandvoort, Austria, or probably everything. But yeah, more Suzuka than anywhere else. Bro, what do you think happens to McLaren? I mean, they were on P4, yes, 4th position last year and now last. Yeah, I need to make a video about it. I will definitely make what happened to McLaren for sure. Guess who's back? Guess who's back? What? मेरी ना छोटी सी नीज है, उसको मैं ऐसे करता हूँ. मामा कहाँ गया त्या. Guess who's back? Guess who's back? क्या चल रहा है? What did I miss? Close the chat because all the others who did it because of copyright. भाई बंद कर दिया इसको मैंने. भाई मैं कुछ नहीं कर रहा आज, मेरे को बहुत डरा दिया भाई. चार्ट मतलब कौन सा चार्ट?
अरे वो रहने चार्ट, दे। are you talking about F1 का चार्ट? Because that is हाँ वो just from the website. रहने देते ना, अभी 10 लाख भी तो बचा है, करते हैं, बाद में करते हैं। हाँ, Uh, if you want if you laptop, want, use it. obviously I'm on laptop, use it to watch live timings. I am watching, there are 3-4 screens set up. भाई मैक्स वर्स्टैपन को प्रॉब्लम चल रहा है, तूने सुना अभी? शुभ? हाँ, लेकिन what is the problem? So the problem is the drive shaft again. I think Oh, the right hand drive shaft, like yesterday, it oh, wait, failed. wait, wait. There is panic. That is, there is panic on the pit wall. Yes, there is panic inside. But Max Verstappen is doing 0.6 seconds faster lap. I mean, what happened with Perez? Is something wrong with Perez or something? There I is think something wrong is with wrong. Perez, not Max Verstappen. Because they were faster from the whole grid, 1 second ना, जैसे अपन ने देखा था. Having a bit of a long pedal. Yeah, that's okay. Like it happens. अच्छा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये. लॉन्ग ब्रेक क्या होता है भाई? I mean, it's normally either due to overheating of the brakes, because you see they are pushing, or it because it's either because there's some problem in the brake system itself. But if it's a problem in the brake system, he would know by now. 1 second. हाँ. The race is pretty much standstill unless something. अभी सोचते हैं गीत भाई कि अगर यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं, मैं उसको सुन रहा था, मार्टल ब्रंडल को सुन रहा था, वो ये बोल रहा था कि ये लॉन्ग ब्रेक क्या होता है. That's it. Yeah. So basically, when you'll end up wearing the brakes out, just a little bit of wear, basically. So whenever there's a little bit of wear due to overheating, or if you are pushing the car, it tends Got to it, happen. got it. But it So- irritates the driver because they can feel the smallest changes. Right. When we had Jamie, you also know Jamie, right? So he's Yeah. in Formula 3000 driver right now. So Jamie said that a driver's ass, was it Jamie or Nitin Jacobs? I think Nitin Jacobs. Nitin Jacobs, who is the owner of Snap Racing and one of the highest level marshals in FMSCI, also a marshal in Formula E. A very good friend of mine. I mean, एक बार ही मिला हूं मैं उनसे, क्या ज्यादा दोस्ती है, but हाँ, अच्छे बंदे हैं बहुत. So he said that driver's ass is the best sensor in the car. Definitely. And one of the best asses on the grid is that of Sergio Perez. He's regarded to have the best ass because if you see the data, his throttle application is just, and the amount of wheel spin is just beautiful. Oh my god, I just remembered something. Avenger movie के अंदर कैप्टन भाई, अमेरिका बोल के दे, एस बोल को दे. बोला था, oh my god, that's definitely the ass of America. Adamya, please don't use caps, yaar. We hate it when you do this. Don't do this, please. Ass of Mexico, yes, the ass of Mexico. Can you share your leak code? हाँ, मैं देता हूँ भाई. मैं बाद में देता यार, मैं तेरे को लीक कोड एक, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर, मेरे को तेरे को वहां देता. साइन इन करना पड़ेगा. यार लोगन सार्जन कितना अच्छा कर रहा था. लोगन सार्जन ने ना अभी इंजीनियर से बात कर रहा था वो, तो उसने बोला था कि भाई हल्क को भी ओवरटेक कर लोगे, पर उसके बाद जो ग्वान ने ओवरटेक किया उसको, निक डिवरीज ने ओवरटेक किया उसको. नाउ नॉरिस इज अबाउट टू ओवरटेक. माय गॉड, मैं क्या देख रहा हूँ, नॉरिस ओवरटेकिंग लोगन सार्जन. ओह माय गॉड भाई, हजम नहीं हो रहा यार, ये खाना क्या हो गया इतना बुरा कंडीशन देख के.
More problems. More problems. Bro, you're on mute. Sorry about that. No पेरेज बोल रहा problem. है कोई बकचोदी नहीं चाहिए, मेरे को जीतना हाँ है। हाँ, तू नेतागिरी नहीं ठोकेगा यहाँ पे यार, तू नेतागिरी नहीं ठोकेगा यहाँ पे। मिनिस्टर मैं हूँ, मिनिस्टर तेरा मैं हूँ। भाई जीतेगा आज, हाँ। But it's You will have impressive to huh, favor me. that Mika Perez Häkkinen. बंदा है भाई Mika मीका। Häkkinen यार, बंदा था यार, जान थी इसमें यार। तो यार वो ऐसे ऐसे एक हैं? Oh, समझा रहा Shumi था, Shumi in माइकल शूमाकर को in समझा रहा था। Spa. A lot of this stuff happened in McLaren. You remember when Ron Dennis Yes. was there? They used to favor a driver a lot of times than the other one. Yes. But also Ron Dennis was very famous for putting two strong drivers together. I mean, Senna, Ron Senna Prost, Dennis. Senna Prost. I mean, he Guys, wanted the we best don't really driver. need this. Are we pushing now? You're free to push. दोनों 32 कर रहे हैं यार। भाई वो पीछे हो गया, वो बोला तू कर ले, तू तेरा कर, तू तेरा तू कर। कर ले। No, they're both like setting equal lap times. Yes, flanker. Yes, I also think the same. 100 Oh नंबर का yes, पोडियम it's मिला Alonso's उसको। 100th podium. Wow. अरे तेरे Nice. को पता वो F1 गुरु स्टैट्स जो है ना, मतलब अपना सुंदरम ने हाँ बहुत बढ़िया स्टैट्स मारा एक। उसका मैं ना इनसाइड पॉड सुनता हूँ, तू सुनता है? बहुत इनसाइड हाँ। लाइन करके उनका F1 पॉडकास्ट है, बहुत बढ़िया है। तो उसके अंदर सुंदरम ने बोला था 50th पोडियम आल्सो वाज 2008 सिंगापुर ग्रैंड प्री night race, and this podium again is a night race. It can happen. 2008 का तेरे को याद है सिंगापुर ग्रैंड प्री? 2008 का। Yes, that is the whole controversial one, isn't it? Nelson Piquet Jr., the crash kid. I was very happy that day. I remember. Who's But gonna of course, I did crown? not know it was. Yeah, I did not know it was the whole scandal. But I was very happy that जो हुआ। I think the driver of the day is Max Verstappen. Yes, I don't think anyone's driven better than him. अनन्या क्या बोल रहा है? 2008 सिंगापुर ग्रैंड प्री के अंदर भी P5, अच्छा तब P5 से P1 आया था क्या? नाइस। What is 1/10 of a second? भाई तू सोच 1/10 of a second क्या होता है, मैथ्स लगा। Whoever wins Alonso and Aston Martin's gonna celebrate. हाँ भाई। Whoever wins Alonso and Aston Martin. अरे वो तो है ही यार, पोडियम तो सेलिब्रेशन करेंगे, 2 race 2 podiums absolutely. Nice, nice. 5 लाख बचे हैं यार. Verstappen did a good race यार. हाँ, Verstappen is a good race, but I'm impressed with Perez. I am also impressed with Perez. How is Perez? अपन को लग रहा था कि लास्ट सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन 2022 के अंदर पेरेज नीचे जा रहा करके, नहीं तेरे को याद है? अपन सब बोल रहे थे ही इज लूजिंग हिज जिमी, ही इज लूजिंग हिज स्टफ, मजा नहीं आ रहा है उसके साथ, उसको चेंज कर देंगे, इसीलिए तो डैनियल रिकार्डो को लाए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। Ooh, look at this! The McLarens are fighting. ये देख भाई। Oh, yeah. सबको टर्न 2 पे ही ओवरटेक करना होता है। ओ यार ये नहीं कर सकता लैंडो नॉरिस, ही इज वीविंग नाउ, ही कांट डू दिस। Ooh. I think Google's He was Chrome all- logo is proving very unlucky for McLaren. Huh? He was ahead. But bro, check this out. Piastri is on 43rd hard tire.
Still he overtook Norris, and Norris Fuck. still fighting with him is such a sad thing for Norris on a medium. You see the difference. 25 साल पुराने medium एक tires. मिनट एक मिनट अच्छा मैक्स मैक्स वर्स्टैपन का रेडियो था अरे हास का भी चल रहा है नहीं, दोनों हाथ नहीं है, हास का भी एक चल अल्फा रहा है टावरी है. अच्छा हाँ एक अल्फा था Kevin Magnussen on Yuki Tsunoda. हाँ जीन हास So yeah, I was saying Norris on 26 old mediums and 44 olds versus the 44 old hard tires of Piastri. Yeah, Piastri is doing some tire saving here. But यार, if Magnussen take points, भाई मजा आ जाएगा यार. भाई मजा आ जाएगा. नहीं, अगर मैग्नेसन पॉइंट ले जाएगा ना तो मजा आएगा भाई. हाँ ले लेगा पिछली रेस के अंदर विलियम्स लेके गया था, इस रेस के अंदर हास लेके जाएगा. कितना मजा आएगा यार. मेरे को हल्क चाहिए था, बट मैग्नेसन भी लेके जाएगा, वही भाई है. गैप बिटवीन मैक्स एंड पेरेज 6 seconds. Why is Hamilton not struggling on those mediums? Very good question. But I think he is struggling. he is compare them He to is Russell struggling. Compare him to Russell. उसके कंपैरिजन के अंदर 3/10 0.3 seconds. एंड अगर अपन उसको साइंस से भी कंपेयर करें तो साइंस is doing much better laps. Leclerc is not doing good laps. What happened with Leclerc यार? क्या उसका मोरल गया he's क्या? lost he's like fuck it मैं जा रहा करके भाई, मेरे को नहीं खेलना, मेरी कच्ची गोड़ी है ऐसा. और रेड बुल उसके बीच में, हम तुम्हारी ऊंच पे रोटियां पकाएंगे. अरे यार मनीत यार, वो सब लोग बोल रहे हैं ना कि लोगों का वो कॉपीराइट चल रहा है काम, तो इसलिए नहीं कर रहे यार. क्यों अपन को फालतू, अपन को चलाना है काम. 4-5 साल और करेंगे ना, देखेंगे ना क्या अपन कॉपीराइट इशू की करंट क्यों फंसे. कुछ तो दिखा दो. क्या देखना तेरे को अनुज, हैं क्या देखना है? गंदे बच्चे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं यहाँ पे. no we should possibly think of doing like a manual leaderboard 1 second, तूने रसेल का ऑडियो सुना? नहीं नहीं तेरा पीछे चल रहा है. नहीं मेरा आगे चल रहा है एक्चुअली आई मिस्ड इट सो वो बोल रहा है कि देयर माइट बी अ पॉसिबल 5 second पेनल्टी फॉर अलोंसो. सो रसेल को वो उसका टीममेट, उसका रेस इंजीनियर बोल रहा है कि 5 सेकंड का गैप मेंटेन कर रहा है. राइट नाउ रसेल इज 4.4. Something with Jack and pit stops. yeah I mean you should see कितने लैप बचे 2 लैप बचे you should see Alonso push like crazy if that's the case I mean, obviously yes. I mean, I'm sure they would have told him. If they've not told him, they're idiots. भाई रसल को देख, रसल ने अपने पीछे आग लगा ली. Now Russell is bucking up like anything. हाँ Russell is all green sectors. His time has improved than Alonso already. Bhai, every time, do you remember the last time when a penalty, because of a penalty, somebody else went on to a podium? Alonso radio. अच्छा तू आगे चल रहा है, मेरा आएगा अभी.
I heard. अरे यश जा रहा है, क्या हो गया? कहाँ क्यों जा रहा है भाई? रुक ना, थोड़ी देर तो रुक, खत्म होने वाली है यार, सेकंड लास्ट लैप बचा है, उसके बाद शुभ अपनी बातें भी तो बताएगा। 15-20 मिनट में खत्म करते हैं, टेंशन मत ले, मत जा, रुक जा रुक जा, बैठ यार, इतनी देर बैठा है, मजा आया तेरे साथ रेस देख के। ये कौन है भाई? रुआन रुया। That was Japanese GP. Leclerc gets penalty. .8 Russell, 4.9. I'm pushing like a madman at the moment. But he's out. Ooh, 5.025. 5.043. 5.064. 5.01. Verstappen is going for the fastest lap. But Verstappen was down 33.5. 0.8. Maybe he was saving his batteries on the last lap. He's 1 second faster in sector 1. 33.7 by both Russell and Alonso. सौमित की फेवरेट टीम है फरारी, मैं जान गया सौमित तेरे को। Why Valtteri Bottas is underperforming? I don't know. Geet by first time on the list. Thanks bro. Whoa, they're both matching each other, dude. Yeah, Russell is slower. He got 5.2. Russell gaya. Russell won 5.1, 5.2. Ooh, 5.0, 5.0. Oh my gosh, this is going to be close. Verstappen ले गया fastest lap. अभी क्या होगा भाई? 5.1. Oh. You're not allowed to slow down that way, Alonso. Sorry. 5.1. 5.1. ले गया Alonso, ले गया. 100th podium for Fernando Alonso. मेरी टीम जीत गई. मेरी टीम. Honestly, this is what the race pace was. Right. Alonso, like Red Bull 1-2, Alonso P2. I didn't expect Ferrari to struggle so much, but मैंने बोला था tire wear का थोड़ा scene है Ferrari का. So you see how Mercedes were much better on the harder tires. But and then Alpine. But Magnussen is the surprise. Right. I did not expect Magnussen in P10. I mean, I definitely think Magnussen is a surprise, but more surprise for me is Ferrari and Mercedes. I assumed that Mercedes is gonna be worse than Ferrari, like we discussed. तूने तो बोला था race pace के अंदर 0.3, 0.2 है Ferrari and Aston Martin. Yeah, 0.5. Yeah, I did say, but right. मतलब their initial pace was really good, लेकिन उनका hard tires पे they struggled more than I expected. Right. Yeah, I also think the same, and I mean this was the thing. 1 second, मैं fantasy का link दे रहा करके hold करना 1 मिनट, sign in मार लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अब ठंडा हो गया सब मामला. But a lot of issues with Red Bull as well. अभी देखा जाए ना तो downshift, वो अपना drive shaft वाला अभी भी issue pending है उसका ना. By the way, so we'll stop this now. Nice leaks. One sec. So how do you share this? अच्छा share leak. अच्छा link ये रहा. Podium अभी देख भाई, celebrate करेगा बस Alonso भाई, ऐसे कि उसने ही जीत ली रेस.
या नहीं है My भाई name भाई is वो Lagan. My name is तेरे को वो Lagan. याद है वो माइकल शूमाकर का भाई वो एक्साइटमेंट वो उछल जाता था पोडियम के ऊपर भाई मस्त था नाइस Why Shubh left F1 trackside? I wasn't on trackside. I only went twice trackside to experience the entire event because I had put some updates on the car for those events. That's all. I never worked trackside. My role was mostly team factory role. नाइस कुछ एक्साइटमेंट दिखा पेरेस भाई टीम इंजीनियर से मिल रहा है अभी but nice anybody who has more questions with Shubh can go ahead and ask अमीश बोल रहा है मनीष बोल रहा है कि भाई Alonso is the अमिताभ बच्चन हाँ off very nice F1 F1 हाँ again 3 Red Bulls on the podium good joke magic Alonso yes El plan is working yeah again Perez says 3 Red Bulls on podium yeah who gets the fastest lap Verstappen gets the fastest lap with 131.9 31.9 31.9 जॉस वर्स्टैपन को देख उसका मुंह देख ठीक है ना क्रॉफ्टी भी बोला था ओनली पर्सन who's not smiling is George Verstappen यार बाप होता है यार कम ऑन यार हाँ आर्यन पूछ रहा है अच्छा guys whoever is with us if you like the stream and the जुगलबंदी please go ahead and like the stream and follow the F1 aerodynamicist and follow the F1 data analytics on they're on Reddit they're on Twitter they're on Instagram for sure go and follow F1 aerodynamist on Instagram as well he's a fantastic channel I wish मेरे पास इतनी knowledge होती जितना शुभ के पास है at least of जो भी शुभ को आता है Formula 1 के अंदर he's met amazing people he's done something last day also कल भी है ना शुभ ने हमको बताया था कि he has this book how F1 car is made by Sir Adrian Newey and Adrian Newey knew his name he signed it and it was a beautiful story that he told us so it was a fantastic opportunity to listen to Shubh Shubh we still have a couple of comments if you have time yeah for sure let's do this do okay aerodynamic okay yeah go ahead do I'll aerodynamics point out role the questions work on trackside or factory mostly factory थोड़े roles होते हैं trackside पे लेकिन in a team of 50 there'll be 2 people trackside so Shubh bhai do you think Toto Wolff is working on a B-spec car which will come and change their upward trend in the season for sure they've just massively said fuck off to the older concept I think and I think वो लोग उनके नेक्स्ट ईयर के गाड़ी को आगे बुलाएंगे एंड यू विल सी प्रॉब्ली मिडवे आफ्टर अप्रैल और मई जून यू विल सी दैट न्यू कार कम टू शो करेंगे भाई मर्सिडीज है कुछ ना कुछ तो करेंगे बैठेंगे नहीं मुंह देख के I mean Toto Wolff have gone out and yes said that they're gonna have multiple changes James Elliott his name is James Elliott which Elliott is the name Mercedes technical director right now I don't know Mike so Elliott. So the technical director of Mercedes came out and said that we're going to see visible changes in Mercedes in a very upcoming race, especially Imola के अंदर हमको दिखने वाली है, जो मई के अंदर होने वाली है. I think Imola is going to be the 4th race, right after Australia. Yep. Perfect. The 4th race. Bear in mind that it has a 1-month gap. Yes, because of Chinese Grand Prix cancellation. Yeah. In April हमारे पास पूरा अप्रैल का महीना है खाली. तो हाँ उस समय सब लोग मैं हॉलिडे पे जा रहा हूँ अप्रैल पे भैया हम कहाँ जाएंगे हम तो यहीं हैं टोटो फुल प्रो शहर रेस में पूरी बदल गई देख भाई अलोंसो को देख अलोंसो ले रहा है मजे अलोंसो 100 पोडियम मेरा भाई है अलोंसो यार ये वाला ज्यादा अच्छा कलर है अलोंसो के पास नियॉन ग्रीन ये बहुत अच्छा है मेरे को चाहिए ये कैप है ना ये अच्छा लग रहा है कैप I want that. ये ऑर्डर करवा भाई गीत भाई तेरे भाई से ऑस्ट्रेलिया से मैं बोलता उसको 2 मंगवाता हूँ एक तेरे लिए भिजवाऊँ तेरे को फिर बढ़िया बढ़िया 3 मंगवाता हूँ एक गिव अवे करते हैं चल क्या बोलते हैं एक गिव अवे करते हैं सही है I've never given away anything अगले रेस का बेस्ट कमेंट only hugs kisses and wishes
बट इस सब कैप भी करते अगले रेस का बेस्ट कमेंट अगला, हाँ लाइव यार, फीडबैक। अगले रेस का बेस्ट कमेंट एक टोपी अभी जो मिल रही है अपन को, आई थिंक दिस इज प्यूमा, प्यूमा पे मिलती है, बॉट दिस फ्रॉम प्यूमा, दिस इज व्हाटएवर 2000 या 1500, सो वील प्रोबेबली डू दैट नेक्स्ट टाइम, गाइस रिमाइंड मी if you want that, we'll do that for you, देंगे ब्रो डिस्कॉर्ड पर बनाओ भाई, कर बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्राउड नहीं रहता डिस्कॉर्ड पे अपना हिंदी वाला। राइट। तरन भाई, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना टेक योर कमेंट बिकॉज वी डोंट लाइक कैप्स, फुल कैप्स हमको बहुत गंदे लगते हैं, देख के ना ऐसा कुछ मन में ऐसा होता है कि टीचर ने थप्पड़ मार दिया, नहीं करने। रेड बुल आर एक्सट्रीमली फास्ट। एनी कमेंट्स फॉर शुभ गाइस? शुभ इज विद अस, ही इज सो ग्रेशियस, वो हमारे चैनल पे आए हैं, एंड इट्स गोना बी सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आई मीन ही शेयर्स, शुभ हमारे साथ है ना, प्लॉट्स भी शेयर करते हैं, everything that we see around and every knowledge that I get at least of aerodynamics is picks of Formula 1 is from Shubh, so he's an amazing guy. आई एम वेरी सॉरी कि आई कुडंट मेक इट अर्ली ऑन, क्योंकि मेरे को वो प्लॉट्स थोड़े एक्सप्लेन करने थे, लेकिन अगली रेस में जरूर करेंगे। Right. आज I was in crisis management mode, so I literally just made it. Thanks for doing that, bro. From where did you order Aston Martin's cap? Bro, this is from Australia, from Trackside Australia. Albert Park के अंदर मिलती है टोपी, वहाँ जाओ, वहाँ से लाओ। भाई भैया जी नॉरिस का क्या होगा, भैया जी नॉरिस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया नॉरिस का। मैक्लारेन का कैप डाल दे। अरे वो रिकार्डो का है अभी, रिकार्डो मॉरल सपोर्ट के लिए होता तो कितना मजा आता मैक्लारेन पे। भैया जी नॉरिस का क्या होगा? अरे आपने वो मीम देखा, भैया मेरे मुंह से निकलेगी। just kidding. By the way, chat, for some of you who don't know, भाई गीत की मीम गेम बहुत अलग लेवल पे है, सही टाइम पे क्या मीम भेजता ही क्रैक्स मी एवरी टाइम इन आवर कन्वर्सेशंस। अच्छा, मेरे लिए क्वेश्चन आए हुए हैं। शुभ, माय सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू F1 cars don't wheel covers unlike other race cars? Don't cover wheels because it's called open wheel racing. Open wheel They racing, bro. You know, they have it's a category called open wheel racing, so Yeah, there are multiple, yeah. unlike even even if they want to, they wouldn't, because it's a separate category of motorsports altogether. Right. और भाई So अगर with a व्हील very- पे कवर डाल दो तो एरोडायनामिक्स आधा चैलेंज चला गया तो। But there is an eyebrow on the wheel, right? Yeah, but that is just because you need to some way manage. So because teams were doing wheel exhaust, you know, they were doing like wheel blowing and lots of tricky things. FIA ने बोला कि हम लोग थोड़ा डालेंगे उस पे कंट्रोल, तुम लोग ज्यादा शानपत्ती मत करो। Nice. Cool. Shubh is a very important addition because of his absolute knowledge. Yes, he is a great knowledge. Thank you भाई, thank you. Last year bought a cap of Ferrari, उसके बाद एक रेस नहीं जीती। भाई मैं भी नहीं पहनता, तुमने मेरे को पूरे रेस के अंदर पहनते देखी है क्या? तुमने मेरे को पूरी रेस के अंदर पहनते देखी है क्या? मैं नहीं पहनता हूँ मुझे Ferrari पता की cap। भैया ये कैप मनु से मैं नहीं पहनता हूँ। गीत भैया फर्नांडो के सीटिंग पोजीशन देख, वो जाके अपनी सीट पे नहीं बैठा, वो मैक्स वर्स्टैपेन नंबर 1 के सीट पे बैठा। नहीं, उसकी सीट पे पेरेज ने हेलमेट रख दिया था, इसलिए भाई हम्बल आदमी है यार अलोंसो, सब पार्ट है प्लान का, सब पार्ट है। उसने बोला पेरेज का, अरे मेरे सीट पे रख दे तेरा हेलमेट, मैं इधर बैठेगा, मैं तो नंबर 1 है। भाई पेरेज है ना, पेरेज डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे करके बैठा है और वो ऐसे बताएगा, this time I'm gonna win this one time out of what 3 million whatever number of times I'm gonna win this world championship in 2023। अरे ज्यादा हंसा दिया, पानी पी ले भाई। गूफी पूछ रहा है भाई, शुभ व्हाट आर द लास्ट मिनट अपग्रेड्स एंड R&D दैट टीम डू इन रेस वीकेंड्स? भाई ये कॉस्ट कैप के सीजन में सब उड़ गया है, अभी नथिंग इज लास्ट मिनट, एवरीथिंग इज प्लान्ड। अरे तेरे को एक दो स्टोरी बताता हूँ मैं। There have been stories of students who have flown with a part to the racetrack for a race update। मतलब फ्रंट विंग अपनी लगेज में डाल के, रेड बुल स्पॉन्सर होता है, तुम लोग जाओ अपनी लगेज में डाल के फ्रंट विंग और लेके जाओ। लगेज में कैसे डालेगा इतना बड़ा फ्रंट विंग? No, because it's all pieces, right? You have like अच्छा, front pieces, flaps and all of that.
So and it's basically in two parts, and then they package it really well. They put it into your luggage और बोलते भाई तुम लेके जा अपने luggage पे, they pay for everything. लेकिन एक ऐसा स्टोरी था, मेरा सीनियर बता रहा था मेरे को कि एड्रियन न्यूवी वांटेड अ पार्ट ऑन द कार इन द रेस, कि अभी फ्राइडे हुआ ना, सैटरडे पे उसको वो पार्ट चाहिए था, थर्सडे पे इन लोगों ने डिसाइड किया, तो दे हायर्ड अ प्राइवेट प्लेन, flew the part. This is before the cost cap era. Flew the part, and then the next day they decided not to use it. So this is pre-cost cap. अभी भाई ऐसा कुछ नहीं होता. This is should you're not married, so this is wifey. This is what wives are. मुझे ये खाना, मुझे ये खाना, मुझे ये खाना. I mean, okay, let's not nerd out right now. But anyways, one thing that I want to say about this comment, I'm absolutely okay with Ricardo laughing on Piastri and Norris. I don't care. But when Vettel's name comes, I get very serious. देख यार क्या होता है आनंद, मुझे ना तू भी बहुत समझता है फॉर्मूला 1 को, तूने अच्छे अच्छे कमेंट मारे थे पहले स्ट्रीम के. I think you also understand. I definitely understand. A racing driver doesn't retire because of the lack of the car or because of the lack of the team's commitment or something. A racing driver like Sebastian Vettel always will retire because of his lack of commitment. उसको अपने लाइफ के अंदर अलग प्रायोरिटीज दिखी, वो गया. आपको क्या लगता है वेटल चाहता था कोई और बेटर टीम ही नहीं जा सकता था? उसको नहीं पता था क्या जो यार जो पूरे साल भर इसको दिखा था फर्नांडो अलोंसो को, वेटल को नहीं दिखा था क्या कितना पैसा डाल रहा है स्ट्रोल के पिताजी और कितना सब कुछ हो रहा है? बट वेटल डिडंट रिटायर बिकॉज वेटल डिडंट, you know, whatever reasons. I think Vettel retired because he wanted to retire. मतलब आपको पता है ना, जैसा जब मतलब I believe Vettel is one of the best drivers out there in the world, always, of all times. This because of my fan, he's my favorite driver, an ex-favorite driver. So yes, I think Vettel retired because he wanted to, nothing else. Yeah. So a comment for Shubh. Shubh, how front brakes gets cold while the race? Because in road cars, brake fail when they get heat. We see this stuff a lot in long rides. Simple question, not a aerodynamics so, it's a mechanical question. Yeah, but mostly, I mean, you cool the brakes by at the start of the race weekend. You have a pretty much an idea of how much braking is required throughout the track, so how much cooling is needed, and based on that cooling you have your brake ducts, the sizing of the brake ducts, and you cool your brakes. And if you require more cooling, then you open the brake ducts a little bit more, and if it's not required, then you blanket by using something like a tape, literally. So yeah, the mass flow rate, because the cars are going at such high velocity, you are able to cool the brakes quite easily. But you always have to remember that all the air that you pass through the ducts for the braking is a hit on your aero penalty, is a hit on your performance. So the game the teams play is how less cooling, or how much less cooling can you give to your brakes so that they can just survive, literally just survive. Right, and they work in a temperature window. So if you don't heat them enough, they don't work at all. Exactly. And by the way, जितना भी अभी शुभ ने बोला ना, इसके दिमाग में आंसर तो पता था उसको, आंसर तो उसके रिफ्लेक्स पे है, उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चल रहा था इसको हिंदी में कैसे बोलूं. हाँ एग्जैक्टली. अरे मेरा दोस्त भी यही बोल रहा था, भाई तू हिंदी में आंसर कैसे देगा टेक्निकल. I'm like, ट्राई करूंगा भाई, ट्राई करूंगा. Very good point. You could see the struggle. He was smiling as I knew you. इसको प्रॉब्लम चल रहा है, इसको भाई बोल नहीं पा रहा है. Did you see, by the way, Helmut Marko is standing in the top, every other, all the pit crew of the whole racing formula. भाई ये बंदा जो दिख रहा है ना तेरे को, ये तो इसने ट्रॉफी कलेक्ट की है रेड बुल का. भाई ये बंदा बहुत शार्प बंदा है, ये परफॉर्मेंस हेड है रेड बुल का. बहुत शार्प बंदा है, बहुत शार्प बंदा है. हाँ, क्या नाम है इसका, पता है क्या? याद नहीं यार, भूल गया इसका. कोई बात नहीं, मैं करता ना, विकिपीडिया करता. We used to call him all by their, he's the head of vehicle dynamics and tires. So basically the vehicle dynamics and tire groups reports to him. अच्छा, बहुत अच्छा बंदा है. lot of times in the factory, जब फैक्ट्री सपोर्ट करते थे तो every time he used to come on the race weekend and बातें करते रहते था. Very nice, chill guy, but very intense. Like you can see that this guy means business. yeah.
हाँ यार, आई सजन मैंने ना ड्राइव टू सर्वाइव नहीं देखा, बट वेटल ने खुद को अच्छा सी ऑफ दिया. आई स्टिल रिमेम्बर हिज स्पीच. उसने ना बहुत Yeah, अच्छी बात बोली थी. 100%. He's got the best send off compared to anybody on the grid. राइट. स्पेशली दैट. सॉरी शुभ, तू उसके पहले पॉइंट बोले, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ. तो उसकी स्पीच के अंदर ना उसने बोला था, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ड्राइविंग राउंड एंड राउंड इफ वी डोंट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इनफ. I want everybody to do something in their life, not just drive cars in round fashion. So, I mean, that was, and वो है ना, एक ऐसा मोमेंट होता है ना कि आपको अपनी आपकी जिंदगी दो बार चेंज होती है. एक जब आप पैदा होते हो, और दूसरा जब आपको पता लगता है आप पैदा क्यों हुए हो. सो आई मीन, आई विश कि पूरी दुनिया में जितने भी रेसिंग ड्राइवर्स है, इनफैक्ट जो भी कोई भी कम्युनिटी इन्फ्लुएंस कर सकता है, including you, Shubhai, and somehow including me as well. I wanted to do good with people. Frankly, anybody who has texted me ever, I've tried to respond it. I've tried to give him the right advice that I come up with, and people have came up to me and said that आपको YouTube चैनल बनाना है, क्या कर रहे हैं भैया, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. समर्थ करके very recently said this. A lot of other people said that. I want to be as I मेरे लिए ना भगवान वहां नहीं है, मेरे लिए भगवान अंदर है. सो आई रियली थिंक दैट इफ एनीबडी कैन डू गुड इन वर्ल्ड, यू शुड डू. No, definitely, Geet bhai. And one of the things that I wanted to do, जैसे मैं बोल रहा था कि जब मैंने YouTube चैनल चालू किया, first thing I did was my first series on how to get a job in F1. And that is what I wanted to contribute, कि अगर I want to show that you can make it from India, but it takes effort, and how you can make it is what I wanted to start the channel off with. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को एक इंसाइट मिली. And I still get messages on LinkedIn कि भाई आपको देख के थोड़ा होप, faith में they start getting converting, and I believe in my dream. And बहुत अच्छा लगता है जब मैसेज पढ़ने को मिलता है तब. Are you about to cry or cuff? Cuff. Okay. But ज़्यादा बोल yes, लिया. but yes यार, Shubh, especially whatever you've done in life, it's encouraging. But मुझे ऐसा लगता है कि मतलब having met you digitally, obviously we have not met in physical form, but having talking to you, spoken to you, and now 2 live streams old our friendship is, I think अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. You knew something was coming. Oh, Alonso, 10-second 10-second penalty. Oh, which car now? किसने हाथ लगाया बे? So what happened? किसने हाथ लगाया बे? What? I think it was touching. The rear thing was touching. Jack. The rear jack was touching, I guess. मैं तेरा चेहरा देख के डर गया. हाँ, यही बोल रहा है वो. पोस्ट रेस पे जाना तेरे को दिखेगा. द रियर जैक वाज टचिंग. आई थिंक यही बोला. शुभ भैया, जो 15 मिलीमीटर की की हाइट इंक्रीज हुई है, उससे क्या फर्क पड़ा है कार्स में? मर्सिडीज उसे दिक्कत हुई है क्या? So, scene ये है कि when all this discussion was happening कि भाई राइड बढ़ाओ, everybody thought that Red Bull would be against it because Red Bull was the faster car. लेकिन हम लोगों ने अपना होमवर्क किया था, हम लोगों ने ये सब सिमुलेशन चालू करना हो गया हम लोग, and we saw that we weren't facing that bit of a difficulty with it. तो हम लोगों ने बोला ठीक है कर लो.
And I think what we did was we were able to use that change in regulation. As you know, as I say, like Red Bull is very very good at adapting. तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया और Mercedes kind of missed the trick because it was clearly a big regulation change because you know like 3 millimeters 4 millimeters is a big thing on the floor. 15 millimeter बहुत बड़ी बात है and Mercedes missed that. फर्क पड़ता है कि भाई अगर if you don't develop around it definitely you're losing shit lots of downforce है ना तो Right. and people are expecting around half a second which is quite a lot, right? But the teams have improved to not only gain that lap time back but even become faster depending on which track you go. Bahrain में तो ये लोग already faster थे अपने इस race में, as you said, they were like on the same pace. So and again in this race it's easier to be on the same pace because it is very few low speed corners. Most of it is high speed and straight, so you don't get to make that much time up very easily. Right. I think we should make a video about this together if you're okay with this. हाँ बिल्कुल. Like how it affected the complete grid, not just one part of it. But थोड़ा yeah, एक 3 रेस थोड़ा ना एक April में करते हैं. हाँ, I'm planning to let the 3 races happen and then we can do a video on how the cars have developed relatively. That'd be a Nice. nice video to make. Nice. Goofy पूछ रहा है, शुभ, will you join the future streams? बिल्कुल भाई, मजा आ रहा है करने में गीत भाई के साथ and I want to promote the awareness that how people enjoy F1 in India. क्योंकि अगर कल जितना तुम लोग enjoy करोगे तो अपने हिंदुस्तान में स्पोर्ट के लिए सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा. And Right. I would have watched this race with the Goa F1 fan. Sorry guys, I'm ditching you. There's this fan club in Goa, whom I normally go and attend the races with, but this is much better. I did it Thanks for saying that. yesterday and I really enjoyed it. So I'm like, okay, this is how I'm going to do races now. Awesome. Thank you so much. Haas in the podiums now. One second. Haas was in the podium at P10 and Magnussen. Yeah, Magnussen. I think 100th चला जाएगा, but I think it's nothing Next race biggie में for मिल him. जाएगा. यार. क्या है? Next race में मिल जाएगा. Hussein is also saying please join the next stream. I hope बिल्कुल he भाई, बिल्कुल. joins. आएंगे. अरे तरुण मेरी जान, मेरा भाई. Tarun is he's the founding member. I think he is the founding member of Chelsea FC Football Club of Jaipur. Is he founding or not? I don't know. Shashwat was there. Very good friend of mine, obviously. Shashwat, 20 years back friendship. He's Drog Baba. Wow. Yeah, we've been chaddi buddies. Me, Shashwat, Ashish, all these people, and then Tarun is like Chelsea FC's important member. क्या होगा? Alonso penalty कुछ नहीं होगा. Alonso fourth आ गया. No, but That's it. how far was Hamilton behind? Hamilton. Good question. I'll just check one sec. Hamilton was plus 5 seconds. So he. Yeah, he was 10.2. Wow. 10 point. Yeah. So Alonso was one sec. Alonso was what 20 seconds, 20.7 seconds behind Verstappen. I'm seeing it on the normal website. 5 seconds behind was 0.5 seconds से आगे रहा. Yeah. Hamilton missed that position by 0.5 seconds. Yeah. 0.5, not bad. तरुण इज अ ह्यूज फेवरेट. तरुण को ना साइंस बहुत पसंद है, तो वो हमेशा साइंस का गाना गाता है. साइंस को मेन मैन, वो दैट्स द रियल स्ट्रगल इन फरारी राइट नाउ. हु इज द मेन मैन? अरे गाड़ी ठीक कर ले भाई. रसल इज वन ऑफ दोज गाइज टू बीट लुइस इन भाई. अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका ऑफ टाइम चल रहा है लुइस हैमिल्टन का. बट या एनीवेज ये तो ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर्स हो जाएंगे. बट thank you guys, thank you for attending for so long and for so late. I think it's already 12:30 बज चुके हैं. कल मंडे है, आप सबको ऑफिस जाना होगा, I'm sure. And मुझे भी जाना है. I'm sure you had fun. I had a
hell lot of fun. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. Thank you, Shubh bhai. बहुत मजा आया. Thank It you was so fun. much for joining in. Guys, please go out and F1 Aerodynamicist के सारे लिंक्स मैंने इस स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. सबको फॉलो, सब. अगर आपको अकाउंट नहीं है, जाओ और अकाउंट बनाओ और फॉलो करो. अकाउंट बना के फॉलो करो भाई. इतना बढ़िया बंदा है, हमारा भाई है. Thank you so much, Shubh, for coming on. Just to give you guys a sneak peek, this week I'm going to launch a video of the W14 versus the AMR23 CFD analysis, which is in collaboration with somebody from F1 Technical called Wanja. तो उस वीडियो में पता चलेगा कि भाई ये Mercedes के साइड पॉड वर्सेस AMR के साइड पॉड में क्या रहा है. And one of the questions that I think I can answer quite well through the simulations is why is the Aston Martin such a draggy car? You can see it, like why it's happening. So yeah, if you are up for something like that, then do subscribe to the channel, and I think that video is going to be sick. I'm really excited for that video. Yes, that's gonna be sick. A video subtitles on कर लेना, मुझे करने पड़ते हैं. But yes, sorry for that. शुभ की नॉलेज इज अपरंपार यार. थीसिस कर रहा है, PhD कर रहा है यार, और क्या चाहिए. मजा आ गया सुन के. But anyways, is subscribing F1 TV Pros worth it? Absolutely worth it. मैं उसको ऐसे निचोड़ रहा हूँ by the neck. सारी डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ मैं सब सारे एनालिसिस देख रहा हूँ, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ. Again, thank you, bye. Thank you, Hussein, for subscribing Shubh's channel. Everybody else, if not done is, please do it. Thank you so much for joining in today. We'll see you in the next one. Awesome, guys. Take care. Good night. See you. Sayonara. Bye-bye. Good night, everyone. Sayonara.